Lordships, in just 3 minutes, not more than 3 minutes. Sir, is examination in chief spread over more than 18 pages, but I read only 10 or 9 or 10 pages and relevant part. The first part of his statement is a CV of Masood Mahmood, wherein he stated that he joined the police service in 1949, then he remained posted at Karachi here and we've done. Sir, Sorry, I have to keep you pushing because I am also running against time. मैंने 3 मिनट लिए आपसे 3 मिनट अब मैं मुझे करने तो दे ना जी फिर वो आगे बढ़ जाऊंगा फिर मैं वापस ही बढ़ जाता हूँ अब मैं थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मैं आज इसको सर मैं 1:30 बजे से पहले इसको कंक्लूड कर दूंगा ये टाइम आप नोट कर लीजिए 1:30 टाइम नोट कर लीजिए मैं इससे पहले इसको कंक्लूड करूंगा बट सर बड़े इंपॉर्टेंट है बड़ी ही ईमान से मैं ऑनेस्ट बात करूं एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और जनाब जब तक सुनेंगे नहीं हम सुन रहे हैं और दूसरी बात यह है कि जब तक समझेंगे नहीं उसको यूज नहीं करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे मौका दीजिए जी करें सर अब वो मैं बात कर रहा था कि 3 मिनट में आई वांटेड टू रिकैपिचुलेट नाउ it will be 4 minutes. He has given his CV. He joined the police service, remained posted such and such to East Pakistan, came back and he was posted in establishment division, then a punishment post, and then comes the story. He was called by Mr. Wakar, who was establishment secretary of the time, and he was conveyed the message that Prime Minister wants to see you and you must accept the offer which is made to you. First meeting with the Prime Minister praises his integrity and hard work and offered the job of Deputy Director General FSF. And then Prime Minister said, I want to make this force a deterrent force so that people must have fear of it, and the purpose of the force will be to disperse the rallies, this and that, and to send a person in plain clothes to in the meeting, at the gathering, whatever. And to this extent, he has not raised any objection. He said, okay, this is my integrity permits me to do so. He accepted the job. And then come the second part. Second part was that he called me and then he narrated an incident of National Assembly where it is the prosecution case that the Prime Minister of that time, Zulfikar Ali Bhutto, without the Speaker's permission stated that I am fed up with this man and I cannot tolerate this nonsense anymore. Then he called this man and asked him, a task has been assigned to Mia Muhammad Abbas through your predecessor and you please ask him. This man is shaken by hearing this word and pleads, sir, no, this is against my conscience and dictates of God, I can't do that. Anyways, in this perplexed condition of mind, he comes to his office, called Mia Muhammad Abbas and said, I repeated these words verbatim. And then thereafter he says, I was reminded by several times by the Prime Minister, goaded by Saeed Ahmed and Bajwa, and ultimately he goes to the Multan, and then the news came that there is a firing at Lahore, and instead of Kasuri Sahib, his father has been murdered, and this was a surprise for him. And then comes the point, the Prime Minister again asked him, you have not accomplished the task. He said, no, sir, I can't do this. It is against the dictates of God. Sir, abhi 1.5 minute hai. It is the dictates of God, and he says no to the Prime Minister. And this was and ultimately he was taken into custody, and that is the answer. No, this I have concluded. This was the brief summary of yesterday's proceeding, the last phase of the proceeding. Now, sir, the very important point now I will raise, sir. No, sir, it is in the experience of your Lordship and everybody who has practiced or is practicing on criminal side that in cases in our courts are decided on the evidence of the witnesses, I mean oral evidence. Very, very difficult task and very dangerous as well. Because in civil cases you mostly rely on the document. Here you rely on the words uttered by the witnesses.
And the test is very difficult. There is no scientific test to find out whether a man is speaking the truth or telling the lie. No, but the law has taken care of the situation. Law has taken care of the situation, how to analyze the evidence, how to assess its worth, how to appraise, how to reappraise the evidence. The law has Evidence Act of that time. Now Qanun-e-Shahadat has taken care of that. I will draw your Lordship's attention to Article 2, Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat. Mera kahan hai? Article 2, Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat order. You refer to the Evidence Act because at that time... Same है जी, वो Section 3 है उस वक्त. अगर वो आप लिखना चाहें... तो वही चाहिए ना, क्योंकि Evidence Act था ना. वही है सर, एक इसमें कोई चेंज नहीं. ठीक है. आप वो कहते हैं मैं वो पढ़ देता हूँ. नहीं, ठीक है. If it's the same then... एक ही चीज़ है, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है. Section भी वही है. 2-4. नहीं, Section 3 है. Section 3. वो आप नोट कर लेना कि Section 3 of Evidence Act and Article 2 Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat order, exact same wording. So, बड़ा ही important point है. I need your attention, sir. It's a very important point. Ji. Effect is said to be proved. Effect is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it's to exist, this is the one situation, or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. That it exists. No, sir, it has two parts. First is the court consider that this fact does exist. Here the test is court's evaluations. In the second situation, the test is that a prudent man under the circumstances of the case ought to consider that it does exist. So far as first situation is concerned, example could be, sir, may I proceed, sir? Ji. Something happens in this court. A lawyer claims that I have witnessed this, and his lawyer's case is fixed before your lordship. His name is reflected in the cause list, and his name is also mentioned in the order which has been passed by your lordship on the particular date of hearing. Here, the presence of the lawyer on that particular date, at that particular time, to that extent is effect which court will consider that it does exist. It does exist because it is so natural. And now I give another example from this case. The narration of the events of this sad incident at Lahore by Ahmad Raza Kasuri Sahab. He was driving the car, he was, his father, his mother, his khala, they were sitting in the car, they were firing at the car. To this extent, this fact, the court will say, yes, it does exist. More particularly, when none has challenged this. So this is the first situation. Now I am coming to the second situation. Suppose court says, we don't consider this witness on the first criteria. Then court will switch to the second criteria. What could be the possible example of that? Sir, we have a reporter in the court. They have association of the reporter, court reporter, and we see they are daily present in the court. If something is said by a reporter who happens to be present in court so frequently, then that is covered by that first category. But if
some reporter or some media person who normally doesn't come to the court regularly, I don't want to name anyone, but if he says on particular date I was present, so that will be determined under second category. That will have to pass through the test of probability and standard of prudent man. So these are the few examples that in one category you are so clear, you are so confident, yes, it does exist. In the second category, you will apply the test of a prudent man. In our cases, all 90% cases, always it is the second test which is applied. Now the question arises, who is the prudent man of law? It has not been defined, sir, anywhere. Who is the prudent man? It has not been defined. So, does prudent man means a jurist, a scholar, a lawyer of the caliber of Mr. Itizaz Hassan or Kasuri Saab? Are they the prudent man of law? My respectful submission is no. A prudent man of the law has the same meaning as consumer in economics and commoner in politics. That is the standard. A prudent man of law is not a jurist or intellectual, but he has the same meaning as consumer in economics and commoner in politics. And in this respect, sir, I will cite a judgment of the Lahore High Court. This is PLD 2010 MLD 2010 MLD 1612. एक किताब दे दीजिए For what? वो इसी पॉइंट पे कि प्रूडेंट चलें छोड़ें ये बात सर एक बड़ा जरूरी है देख लें ये 2010 का जजमेंट है सर कुछ नहीं हो गया 2010 कुछ 100 साल पुरानी बात तो नहीं है कल की बात है हम चाह रहे थे 100 साल पुरानी बात अब वो भी बता देते हैं पहले ये तो देख लें सर थोड़ा सुन ले पता क्या है I know but we will read it सर मैं उसको because I am only worried about something else मैंने आपसे ये कमिटमेंट कर ली अच्छा चलिए पेज बताएं इसका 130 से आगे मैं नहीं जाऊंगा 1 पेज मैं बताता हूँ सर नहीं आप ही का जजमेंट है आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए चले नहीं मैं आप देख लेना जी आप पैरा 17 देख आप पैरा 17 पढ़ लें पेज है आप पढ़ेंगे प्लीज मैं पढ़ देता हूँ 1621 the main point The main point which is to be determined by this court is whether the story set out by the prosecution in the circumstances of the case is probable or whether the prosecution has proved its case against the appellant without any shadow of doubt. Article 2.4 of Kanuni Shahadat Order 1984 contemplate how effect is proved. It says, ये मैंने आगे 18 में, a prudent man is law is neither genius nor a goof, but has the same meaning as consumer in economics and common man in politics. So, important point so far as to determine the prudent man is that its definition changes with the circumstances of the case. When you are considering the evidence of the prudent man, in the case of a lawyer, the standard is different. When you are examining the case evidence of a police officer, the standard is different. When you are dealing with the case of KPP, the definition of prudent man will not be the same as it is in Punjab. And similarly, while you are dealing with the case of Balochistan, the prudent man of Balochistan is different from the prudent man of KPK. So that changes with the circumstances of the case. So the next question is whether the court will call some prudent man and get his opinion, because we are not having the jury system in our country. That is the reason it is said generally that all the lawyers and the judges who are practicing on the criminal side, they must have some idea of behavior, conduct, action and reactions of different segments of the society. A good lawyer ought to know how a particular community behaves. As we have in Punjab, I can quote 110 examples, but I will not. So this is the test which you will apply. Now, this test, when applied to the evidence of a witness, an ordinary witness,
Then the court, after applying the test, concludes whether his evidence is probable, whether it's inspired confidence or not. But in the case of approver, the situation is altogether different. In the case of approver, it is almost settled that his evidence will be viewed with special care, and evidence of approval or accomplice cannot be viewed without natural reaction of distrust and incredulity. So this is the basic principle. When you start examining the evidence of the approver, so you will start with the negative. Okay, you will not believe this, and question arises why it is so. Why this care is to be taken while examining the evidence of approver? There are 4 reasons for that. 4 reasons. Number 1 is he is self-confessed criminal. This is number 1 reason. He is self-confessed criminal because he is accepting his guilt, he accepts his participation in the crime. He is a self-confessed criminal. Number 2, he has betrayed his former associates. He has betrayed his former associate. Government जी उसकी है इसकी जिसमें वो टेस्ट है डबल टेस्ट का यार नहीं पता. He, having betrayed his former associate, he is under the temptation of saving his own skin because he has been pardoned. He wants to save his own skin. And number 4 is he has a fear of prosecution. Under section 339 of Code of Criminal Procedure, he can be prosecuted if he did not toe the line of the prosecution. These are the 4 reasons why his evidence, special care is taken while examining his evidence. Now I will read a little passage from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, I mean the majority judgment, where exactly they have settled this point. They have relied on this. तो दीजिएगा यार कहाँ गई? हाँ ये ले ली वापस नहीं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 53 दोनों सुप्रीम कोर्ट की ये सुप्रीम कोर्ट की है ना अब यही छोड़ दें paragraph sir 422. This is a judgment which was been discussed by the Supreme Court and then relied. Just 2 paras sir. Page? Yes sir, 196. Ji. Para 422. More recently, in the case of Dr. Muhammad Bashir, this court has expressed the rule as under. As a rule of prudence, which has almost hardened into a rule of law, it is dangerous to act on the uncorroborated testimony of an approver who is a self-confessed criminal having betrayed his former associate under the temptation of saving his own skin, suffering from the stigma and mark of depravity of character, and approver's evidence cannot be viewed without natural reaction to distrust and incredulity. His evidence must first be tested on the basis of probability or
in probability like the evidence of any other witness, and more strictly so in his case, because it is the statement of a person of suspicious credential. His evidence needs corroboration for the simple reason that it cannot be accepted without mental reservation and distress, and it must therefore gather support from other sources to induce faith in its veracity. अब मैं यहीं पे छोड़ के 4-4 पे आ जाऊंगा. ये अगर कहते हैं तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ. ठीक है. 4-4. I am in respectful agreement with the rule laid down in Dr. Muhammad Bashir's case by 4 learned judges of this court, and only wish to add that when the qualifying phrase "a reliable witness" is used in relation to an accomplice, the reference obviously is not to his moral character and dependability, as the courts are well aware that he is a self-confessed criminal, having betrayed his former associate under the temptation of saving his own skin, and it is precisely for this reason that special care has to be taken in the matter of appraisal of his evidence. The intention, therefore, underlying the first test is to determine whether his evidence is probable and natural in the circumstances of the case, with the result that he can be treated as a reliable witness and his evidence safely acted upon. If requisite corroboration is forthcoming, or whether it suffers from such infirmities and improbability that it cannot be said to be lacking an intrinsic worth. In the later stage, the question of seeking corroboration would hardly arise. That was the submission which I made yesterday. He is subject to double test. But if he fails in the first test, then you will not apply the second test. You will not ask for corroboration. No amount of corroboration will cure the defect. Now I am coming to the statement of Mr. Masood Mahmood. I read his examination chief, and yesterday I stated that I will not touch his cross-examination. Later on I will quote just few paragraphs from his cross-examination, but at the moment, while relying on this statement, I will show to your lordship that this is not natural. It doesn't fall within the category of first test, but you will, lordship, now will apply a second test on this statement and treating him as a normal witness, as if he is a normal witness. And if we are applying that test, no sir, his evidence I have read, is that part as I have read. Now sir, first thing which I will say, sir, after reading his examination chief, what emerges about his personality, what type of person he appears. If we accept his testimony, to what emerges about his personality. And we will accept you as a prudent man. No, sir, नहीं, अभी टेस्ट में अप्लाई नहीं कर रहा. वो a prudent man मैं नहीं हो सकता. वो डफर नहीं होना चाहिए. जी. तो मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा कौन है prudent. I can't be the prudent man. लिख के दे दे. लिख के दे दे. आप लिख देंगे ऑर्डर में तो वो लिखा ही जाएगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर. Thank you very much. What emerges from his statement, I'm just describing, if I have read a statement, so what impression I will form. What impression I will form, what type of person he is. So he is a career officer. He's a career officer. Nothing wrong or adverse on record against him. This is the second thing. Number third is an officer of integrity. This is his claim, and he says that even it was appreciated by the Prime Minister of that time. Zulfikar Ali Bhutto praised his integrity. So this man is with clean slate, very neat and clean person, having no
negative point in his personality. On the contrary, what emerges about the personality of Bhutto? What emerges? I'm sorry, this would not be my personal opinion. I'm sorry if somebody, family member is sitting over here. This is not my opinion about the personality of Bhutto. Why do we have to go there? तो मैं देख रहा हूँ कोई गुस्सा आज कर नहीं, why we are going there? Let's stick to the witness. I'm just expressing my feeling that this, what words I will use, they may hurt their feeling. I was clarifying this is not my opinion. Let's avoid it. Let's avoid it. Don't compare him with the... No, sir, that is must. That is must. That is must. Why? That is must. One personality, other personality. No, but you don't gauge a criminal or a accused on how he compares with the proof. No, sir, I'm not. Please let me explain. Just be with me for 2-3 minutes. I will not use any negative words. But I will just say that if his evidence is considered, the impression about Bhutto is, I will use the soft word, that he will not tolerate any dissent, even in political matters. Number two, according to this, yes, इसी की बात कर रहा हूँ. One opinion. यही मैं कह रहा था. Yes. He must get his way. Fine. दूसरा, he can go to the extent of taking life of his political opponent. This is their case. Yes, यही मैं कह रहा था. Ab now, your lordship will see what was the task for appointment of this gentleman. Now my submission will become relevant. What was the task? Number one was to raise the force, that is FSF, into a deterrent one, so that people must fear. And the force is to be used for political purposes. Number three, the most important was to kill a political opponent. This is the task of the Prime Minister as per prosecution. And for that purpose, he is looking for a suitable candidate. That is the reason. Now question arises whether the Prime Minister had no other option except to appoint only Masood Mahmood. Had it been a position that Prime Minister had no choice, choice was very limited. You have to select a person who has served in East Pakistan, who has served in Karachi, and he is the person who fulfilled all these requirements. Had this choice been... He was also God-fearing. He was also God-fearing. नहीं, वो आगे बात कह रहा है. सर वो आगे आ जाएगी, वो चीफ साहब नाराज हो जाएंगे, मुझे बात को कंप्लीट करना है. वो अब ये वो कह रहा है. अब लॉ क्या कहता है, एफएसएफ का एक्ट क्या कहता है, उसके नीचे इधर ही मैंने रखा था, देखो ये. अब एफएसएफ एक्ट में ये सर एक्ट है 1973 का, ये है जी ना आपके पास, इधर प्लीज दीजिए जी. ये पास हुआ है जी ऑन 29th of June 1973. इसका सेक्शन 5 देखिए. जी. Appointments of officer of the force. For the purposes of this act, the federal government may, by notification in the official gazette, appoint any person who is or has been a member of armed forces, the civil armed forces or the police force. Now kindly see the choice of the Prime Minister. From 3 places he could pick a person who is serving army officer, who is serving in civil armed forces, and he is from police service, and even retired. Now the point comes when I said I will make this submission why this person will be chosen for the task. In his CV, he has not said anything which could make him relevant for the task.
Had he said, sir, I was considered an encounter specialist, and in such and such time I killed such and such person, yes, then he could be a relevant person. But how the Prime Minister will go for this gentleman who is a neat and clean person, who has nothing adverse against him, and who has integrity which is praised by the person who is appointing him? Can any sane person will believe? Would any prudent man will believe this story? Would any prudent man believe this story? Why I will hire him? Why I will appoint him? Why? Answer is no. And then, particularly when I have a wider choice, Your Lordship, I could go to the retired person, find a retired police officer, and then there is no condition that he should be a retired officer of grades 20 or 21. Even it could be appointed as retired SP could be appointed. So there were many, and particularly in Punjab, many could be appointed. But why? Why he was threatened? Accept this assignment, otherwise you have small children. Could it be a reason? So this was my submission, which I was making the comparison of personalities of the authority who has to appoint and the person who has been called for this. So my respectful submission is, if we will apply the test of prudent man, and Your Lordship think like a prudent man, not like a judge. If Your Lordship think like a prudent man, so there could not be any other answer, there could not be any other conclusion. He would not be offered this job. Mr. Manzoor Malik, I bring another perspective. Yes. Let's suppose for the time being, I hope you don't mind, I'm the Prime Minister, and I'm looking to appoint a Director General of FSF, and I want a man of integrity. And I say, I want you to kill my opponent. And you say, yes, I will. I will sack you there and then. And you may say, no, I will not, and I will appoint you. So it could be a test. You understand? No, are you following what I'm saying? I got your point. The mere fact that I've put it to you doesn't mean I intend to. If it's a time of appointment, at the point of appointment, I will ask you, are you prepared to commit a crime on my behalf? And he says, yes. It may be I don't appoint you. For that very reason, it may be a trick question. Let me explain. We are assuming... No, quite right. I will explain. Your example could be correct if in that meeting I appoint him, and before appointing I don't say to him that I want to make it a deterrent force for controlling my opponent. So this example doesn't fit in this situation. No, just to see your own integrity. No, I want integrity. I want crush my opponents. Yes. So are you prepared to commit a few crimes for me? And you say yes. No. First crime, first meeting में there is no mention of this killing. This is in the second meeting. In the first, we are accepting whatever he said is partly true. I change the scenario completely, and I say it could be a test. नहीं, वो test इसलिए. I mean, I don't know. नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल, अगर आप इसको इस तरह लें कि आप एक बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं और आप समझते हैं ये इंटेग्रिटी वाला है, तो आप उसका टेस्ट लेते हैं कि यार मैं तुम्हें कहूँगा ये फाइल नहीं, इस तरह कर दो, इस तरह कर दो. कहते जनाब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा. आप कहते हैं यार ये सही है, इसको लगा लो रजिस्ट्रार अपना. यही बात कर रहे हैं ना. एग्जैक्टली. अच्छा, और अगर इससे आप मेरा जहन में जो बातें आप क्या अंदाजा लगाएंगे? आपने टेस्ट, हमने आप जैसे इंटेलिजेंट बंदे का टेस्ट अप्लाई करना ही नहीं है. हमने अप्लाई करना है प्रूडेंट मैन का. हमने आपका टेस्ट अप्लाई नहीं करना. ये बात आप इसको इस तरह देखें. बड़ी मैं समझ गया हूँ आपकी बात. क्वेश्चन ये है कि आप पहली मीटिंग में कहते क्या उसको. आप तो ये कहते ही नहीं कि मैं अपॉइंट करने लगा हूँ. आप तो उसको कहते हैं कि मैंने एक ये फोर्स बनानी है, ये है वो है, और आगे से वो ये नहीं कहता. वो कहता मेरी तो इंटेग्रिटी. इस तक तो वो एग्री हो गया. मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उसको बुलाऊंगा क्यों? या तो मैं आगे कुछ प्लान किया ही नहीं. आपकी मिसाल के मुताबिक ये तो उस हद तक खत्म हो जाएगी कि अगर ये टेस्ट तक थी तो ठीक है. उसके बकौल तो मैंने सारे काम करवा लिए उससे.
हमने तो करवा लिए ना, हमने तो कह दिया बंदा भी मार दो, ये भी कर दो, वो कर दो। इसलिए ये पहला टेस्ट जो आएगा ये होगा ही नहीं, ये बंदा चुना ही नहीं जाएगा। आज भी इसी तरह अपॉइंटमेंट्स होती हैं, साहब इंटरव्यू करके जो भी करना है वो अलग बात है। अब ये दिस वाज माय फर्स्ट सबमिशन, this is my first submission, and I will request your lordship to, this is not the first category where your lordship will come to the conclusion that this fact does exist. This is the second category where the test will be of a prudent man. A prudent man. It's very difficult. You will assume. Manzoor Mani Sahab, I don't think we are getting too much here, because a prudent man in a very first meeting with a stranger who doesn't he know will tell him that actually I want to commit murder. I mean, would you accept that or that person? नहीं वो तो ये हम बात समझ गए। यही मैं कह रहा हूँ ना जी, या तो आप ऑलरेडी छानबीन कर चुके हो किसी की, तो वो ये इस किस्म का आदमी, इसका रेपुटेशन है। सर नहीं, दूसरी बात ये है, असल में गलती प्रोसिक्यूशन से हुई या विटनेस बड़ा क्लेवर था कि वो अपनी कोई बुरी बात बताना ही नहीं चाहता था। असल बात ये थी, अगर तो वो सही देखें, अगर आप इसको, आपसे कुछ लीगल सवाल करना चाह रहा हूं। सर मुझे ये खत्म कर लेने दें, मैं लीगल भी बताऊंगा, फैक्चुअल भी बताऊंगा। ये मुझे बस, मैं थोड़ा ही टाइम है बस, bear me for another half an hour, मैं मुझे कंक्लूड कर लेने दें ताकि मैं प्रॉब्लम है कि मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कह लूँ। ये मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड सबमिशन इज, एज आई सबमिटेड yesterday, that whether if this statement of approver is accepted as gospel truth, yes, jo kaha theek kaha. So the first test is whether it falls within the definition of conspiracy as it is given in at section 120A. May I read that section, if your lordship wishes? As you wish. Just as your lordship so desires. 120 तो छोटा सा है, कुछ ज्यादा नहीं। जी हाँ, पढ़ा मैं, आप फिर से पढ़ने, बाकी भी शायद पढ़ लें आप। ये जी 120A, definition of criminal conspiracy. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. आगे explanation वो इतना relevant नहीं है। अब क्या ingredients हैं? Two or more person agree to do illegal act. For this case, this is relevant. So if we consider the statement of this approver, so what he said, may I read it again? He said, I was called in the second meeting. Prime Minister said, a task has already been assigned to Mia Ghulam Abbas through your predecessor to eliminate Kasuri Saab. And you please remind him and get it done. You will be held personally responsible. This was offer, if you take it in the civil law sense, a contract, an agreement. Agreement की definition वही है ना, कि जब आप एक acceptance है, offer है, acceptance है और consideration है। अब इसमें एक offer गई उसको कि भी ये काम करोगे। So what is his reply? He says, sir, I was shaken. I said, no, sir, this is not only against my conscience, but this is against the dictates of court. This is his statement. And then he said, Prime Minister lost his temper and I came. Actually, it was a direction. It was a direction by the Prime Minister. See, now, मैं तो conspiracy में ला रहा हूँ ना, direction थी ना, तो direction. So would it be conspiracy? My respectful submission is no. This was not a conspiracy because he then thereafter, and if he see, नहीं, अगर हम इसका चीज ले लें as is, it's not actual conspiracy. The conspiracy was an earlier conspiracy. मैं कहता हूँ इसी को लेना. Conspiracy on a conspiracy. No, no. This is a very strange conspiracy where instructions to murder have been given to an officer. And then the conspiracy is diluted
by informing another person that I have so conspired. So it's a conspiracy on a conspiracy. नहीं सर नहीं, ऐसे This is in this way the whole world may get to know of it. नहीं सर ऐसे नहीं. कंस्पिरेसी के अगर आप अगले सेक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें यह है कि किसी स्टेज पे भी अगर उसमें आप शामिल हो गए तो आप सबके एक्ट के जिम्मेदार होंगे. वो मैं पढ़ नहीं रहा, कोई टाइम बचा रहा हूँ आपका. नहीं वो पढ़े ना, कहाँ लिखा है सर वो ऐसे ही है सारे. आप 120 से आगे आप चलते जाएं तो यही लिखा है कि फिर उसके बाद जो आप ज्वाइन करेंगे 115 सेक्शन पढ़ लें, ये लंबा हो जाएगा. आप वो अबेटमेंट के सारे सेक्शन पढ़ लीजिएगा. कंस्पिरेसी फॉर्म ऑफ अबेटमेंट. अबेटमेंट की डेफिनेशन में कंस्पिरेसी भी आती है. और Let's read it. I think we should. साहब मैं तो I would love sir. Because it's troubling me, that's why. नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने. मैं तो डर रहा हूँ ना जी आपसे. उस दिन का मैं मुंतजर हूँ. जी नहीं सर नहीं, मेरा ये है 120 तो पढ़ लेना जी कंस्पिरेसी. अब इसकी सजा जो होती है कंस्पिरेसी में वो 109 में होती है. ये अबेटमेंट कंसिडर किया जाता है. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. एक 120 अगर आप पढ़ें A, definition of criminal conspiracy when two or more persons agree to do or cause to be done, agree to an illegal act. So I'm saying that has already happened, that conspiracy. Sir, this is a second conspiracy. No, what is it about? उसमें नए बंदे को ऐड किया जा रहा है. मैं ये कह रहा हूँ, मैं फेयर असिस्टेंट. मैं आपकी बात मेरे जो कंटेंशन है उसकी सपोर्ट में जाती है. बट आई एम हियर टू असिस्ट योर लॉर्डशिप एज अमाइकस. आई डोंट रिप्रेजेंट एनी पार्टी. No, we know that. मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद अब आप इसका ये पढ़ लीजिए 120B पढ़ लीजिए पहले ताकि बात क्लियर हो जाएगी. जी पढ़ें. Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he has abetted such offence. Abetment आ गई ना. अब इसीलिए for the purpose of punishment we will go back to abetment. Conspiracy. I beg to differ. I think the conspiracy definition is contained in 120A, and this is a punishment. It does not add to the thing. It just elaborates. It's not adding new definitions to conspiracy. 120 पर B पढ़ा है. बी में तो सजा है. तो मैं उसी को कह रहा हूँ ना, कंस्पिरेसी की सजा कहाँ मिलेगी कि उसको अगर उसकी कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कि इसकी सजा क्या है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव अबेटेड द क्राइम. आई हैव अंडरस्टूड दैट. यही है. आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंस्पिरेसी. आई एम जस्ट सेइंग इफ वी टेक मिस्टर मसूद महमूद स्टेटमेंट इन इट्स एंटायरिटी एज ट्रू. यस. Does it constitute conspiracy under 120A? That's all. वो यही है ना जी कि ये सब्सिक्वेंटली उसमें आप शामिल हो गए कंस्पिरेसी में किसी स्टेज पे. किसी ये तो बड़ा सेटल्ड लॉ है ना जी. ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ. नहीं देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ. 2 लोग कमरे में बैठे, तुम इसको कत्ल कर देना. सही है, बिल्कुल. या 3 लोग बैठे, बिल्कुल ठीक. ये हो गई कंस्पिरेसी. सही है, हो गई ना कंस्पिरेसी. सही है. अब एक माह बाद या चंद दिन बाद एक और मीटिंग होती है वन ऑफ द कंस्पिरेटर्स की किसी और के साथ. हाँ, मैं ये कंस्पिरेसी कर चुका हूँ सर. फिर भी वो दूसरी वो कंस्पिरेसी है ही नहीं. सर नहीं सर नहीं. आई बैक वो तो डिस्क्लोजर कर रहा है सर. आप मुझे मैं फिर इसमें टाइम बड़ा लग जाना है. मेरी बात को आप ये सुन के सच मान लीजिए कि ये ठीक है. बाद में आप इसको पढ़ लीजिए. मल्टीपल कंस्पिरेसी सर मल्टीपल नहीं है. दिस इज नॉट. आप ये कह रहे हैं कि कंस्पिरेसी एक होती है, उसमें कंस्पिरेटर्स जो हैं वो ऐड होते हैं. क्या बात है. तो आप ये कह रहे हैं माशाल्लाह. मैं नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है. जो इलीगल एक्ट है वो एक हुआ, उसमें लोग ज्यादा आते जाएंगे. जैसे मैं
आपका नाम मैं नहीं लेता, मैं अटॉर्नी जनरल के साथ कोई कंस्पिरेसी करता हूँ, इज कैपेबल ऑफ डूइंग। एग्रीमेंट है। मैं उसके बाद ये जाके लाहौर में किसी और बंदे को ऐड कर लेते हैं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऐड किया उसको, वो भी शामिल हो जाएगा। देखिए मंजूर मलिक साहब, फिर बात फर्क हो जाएगी, फिर होगी कि मैंने उसको कहा था, वो तो बेकार निकला, उसने काम नहीं किया, अब तुम करो ये। सर ये बात, ये हो गई फ्रेश कंस्पिरेसी, मगर ये बात भी नहीं कर रहा है, तो ये मुझे कंस्पिरेसी तो जरा मुश्किल लग रही है कंस्पिरेसी। फिर इसको ऐसे करते हैं, मैं दूसरी बातें खत्म कर लेता हूँ, इसको फिर कल पूरा केस लॉ में आपको लाके दे दूंगा। केस लॉ दिखाएगा, इस पे केस लॉ है, आपकी बात सही सर। ये इसमें अभी सारा कुछ है कंस्पिरेसी में, जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है, ये जो जजमेंट आप पढ़ेंगे ना उसमें भी जजमेंटें हैं। मुझे फिर बार बार आप बिफोर आई रीड अ जजमेंट आई लाइक टू रीड द प्लेन लैंग्वेज ऑफ द प्लेन लैंग्वेज। Plain language of the provision does not seem to suggest that subsequent disclosure of a conspiracy or subsequent calling upon someone else to please fulfill the conspiracy that I entered into earlier. 100% जो मैं बात कर रहा हूँ, that is in accordance with law. I am saying with full confidence. मैं और आप एक conspiracy करते हैं, मैं लाहौर में जाके तीसरे बंदे को शामिल करता हूँ, इवन विदाउट योर नॉलेज, वो तीसरा बंदा भी शामिल होगा और आप भी उसके एक्ट के जिम्मेदार होंगे। उस जुर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये जा रहा है कि 120A में ऐसा नहीं लिखा हुआ, सर बिल्कुल इट मे बी इंटरप्रेटेड समवेयर नहीं, ये सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह देखे ना, आप इस केस को ही लीजिए, आप इस केस को लीजिए, कंस्पिरेसी की आप मान जाएं कि मसूद महमूद के साथ भुट्टो साहब की कंस्पिरेसी है, तो भुट्टो साहब ने मौके वाले बंदे को तो नहीं कहा कि मार दो ना, वो कंस्पिरेसी में शामिल थे, यानी वो आगे जब ये एग्जीक्यूट करने जाएंगे, हो सकता है उस शख्स को मजीद लोगों की आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सर, ये कंस्पिरेसी का। I will put it this way, you have not been able to persuade me, but आगे बढ़ते हैं। मैं क्लियर है सर, जी, ऐसे ही है। मुझे आप केस लॉ में दे दीजिएगा बाद में। केस लॉ, इस पे तो केस लॉ की जरूरत ही नहीं है, पर ये पे छोड़ दें, आप इसको इस तरह समझ लें, साइड पे रखते हैं। अभी आप इसको टेस्ट पे ही रहे कि मसूद महमूद को आप क्या समझ रहे हैं, आप उस पे रहिए ना। अगर आप अगर उसको मानेंगे नहीं तो आपकी डेफिनेशन जाए, वो रेलेवेंट ही नहीं रहेगी, मेरी बात रेलेवेंट ही नहीं, आप उसको ऐसे ले लीजिए, ना मानिए मेरी बात। अब मैं अगली बात, मैंने ये कहा कि अगर ये आप वाली बात माने फिर देन इट इज नॉट ए कंस्पिरेसी, ठीक है। अगर मेरी बात माने तो मेरी बात मानने के बावजूद भी इट डज नॉट कम विद इन दैट डेफिनेशन बिकॉज देयर वाज नो एग्रीमेंट। मसूद महमूद का भुट्टो साहब से कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, बिकॉज ही डिड नॉट एग्री टू दैट। देखिए फर्क ये, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, मैं एक तरफ स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप दूसरी तरफ स्ट्रेस कर रहे हैं। मैं सरेंडर कर जाता हूँ आपकी बात। नहीं चले आगे बढ़ते हैं। मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं वी गो ऑन, चलें, कोई नो इशू, नो इशू। अब इस बात को आप रजिस्टर कर लें, ये कंटेंशन को कि ये कंस्पिरेसी बनती ही नहीं है 120A के तहत। चले इसको यहाँ ले लें, छोड़ दें, अगली बातें छोड़ दें। अब नेक्स्ट पॉइंट, मान लें, आप प्रेज्यूम कर लें कि ये बात उसने सच कही है, अब इसको आगे लेके चलें। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये चीज नोट कीजिए, he said I was reminded several times by Zulfikar Ali Bhutto and goaded by Saeed Ahmed and Mr. Bajwa. इसके बावजूद he has not, this is very important, he has not said a single word कि I ever contacted मियां मोहम्मद अब्बास। ये आप प्रोबेबिलिटी के टेस्ट पे आ जाइए कि आप एक बंदे को शामिल करते हैं, उसको टास्क देते हैं, वो बंदा कहता है जी कि मुझे इन्होंने 10 दफा रिमाइंड नहीं कराया, कितनी दफा रिमाइंड कराया, एंड आई वाज रिमाइंडेड बाय अदर पर्सन एज वेल। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप दूसरे को जाके कहेंगे तो सही ना, आपने पूरा चीफ पढ़ा, उसने एक जगह भी कहा कि मैंने दोबारा उससे पूछा कभी क्या किया है, उसने कि ये बात की नहीं ना। तो ये सेकंड बात है कि इस वजह से भी आप उसकी बात को नहीं मानेंगे।
कि ये बात प्रोबेबल नहीं लगती। और अगली बात अब ये है कि इफ मियां अब्बास is already on a task which has been assigned to him by his Director General of that time on the conspiracy of Zulfikar Ali Bhutto. So why he will be involved? What for? So had it been the situation that Mia Abbas was in the loop, he knew the task, this is their case, so why directly not talk to Mia Abbas? If ID wants to get something wrong done through a SHO or a police inspector, why he will call to DIG? Because this is not a legal act. This is illegal act. He will talk directly to that man. As if Lordship want to do a civil judge to do something. जी क्या ये बताएं this is exactly what I'm saying. ये मैं आपसे सरेंडर कर गया, मैं मान के जोड़ दे तो ये बताएं ये जो मानना आप अग्रीमेंट की बात वो पंजाबी में एक कहावत है जी कि तगड़े दा 70 20 100, मैं तो मान गया हूँ आपकी बात। ये आप जो बात कर रहे हैं समझ नहीं, अब बाद में बताऊंगा। आप बात करें एग्रीमेंट की, सपोज करें आपकी बात हम लेते हैं, उन्हें एग्री नहीं किया लेकिन उनके एक्शंस ये दिखा रहे हैं तो उसके बारे में आप ये तो मैं बता रहा हूँ ना, आपने बिल्कुल सही बात की। पहली बात ये है कि मैं कहता हूँ कि एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है इनको भी नहीं पता जी, मुझे ही पता उसका मतलब, ये इनको नहीं पता। ये पोठोहार की मिसाल नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। पहली मेरी आर्गुमेंट है कि ये कंस्पिरेसी है ही नहीं। ठीक। आप कहते हैं नहीं जी, आप इसको माने कंस्पिरेसी जी, तो फिर नेचुरली उसके कॉन्डक्ट को देखेंगे ना हम जी। तो उसने क्या किया? मेरी बात, प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के व्हाट ही डिड, अभी मैं चीफ पे हूँ जी जी, क्या कि उसने कहा कि आई रिपीटेड दीज वर्ड्स इन ए परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड बिफोर गुलाम अब्बास, दैट्स ऑल, व्हाट एल्स, नथिंग। Would it be probable a task has been assigned by the Prime Minister and that too Bhutto, who as per their case will not tolerate any nonsense? So क्या prudent man क्या कहेगा? ये मान लेगा कि आप 4 महीने फिर खामोश ही रहे? You never said in your chief कि I then asked so and so, so and so, so and so be on the task. ये मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी, I hope I am clear now. Thank you. Now I'm coming to the point that if Ghulam Abbas was already on the task, this is their case. So why Prime Minister will ask this man? Why? Why not directly to that person? And why the Prime Minister will send Sayyid Ahmad Khan and Bajwa to this man? Why those were not sent to Mia Muhammad Abbas? Mia Abbas was in Pakistan, he was at Islamabad in the same office, So that makes it highly improbable. No prudent man will believe this story. This doesn't fit in the circumstances of the case. And secondly, next point is, this is his claim that at page 75, volume 2, is a part of his examination in chief, that when after Lahore's incident, he was called by the Prime Minister. And Prime Minister said, you have not achieved the task. And you must do it. You are responsible. Now kindly see what he says. I will read from my notes. I will not go to the book. इस पेज पे जी वो सर ये पेज है 75 है, वॉल्यूम 2, पेज 75 वॉल्यूम 2। ये अगर जनाब आप पढ़ लें इसको, ये अब ये चीफ से मैं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट टच क्रॉस एग्जामिनेशन। I was summoned, second line sir, I was summoned by Mr. Bhutto on our return from Rawalpindi
He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. अब उनका जवाब शुरू हो जाता है. I said to him, at your behest, an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mia Abbas, who has already your direction through my predecessor. अपने आप को भी निकाल रहा है ना? And the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore. Ab, can a Director General, who first, it is on your assumption that there was a conspiracy, can he say so to the Prime Minister? It's so many words. And then the next part, he claims that I have very good relations with the family. I met the deceased several times. We are from the same town. So does it appeal to the common sense? Would a prudent man will believe this story? Could it be happen? And more particularly, this is the most important point. After these utterances, your Lordship remain, many of you remain the Chief Justices. Your Lordship, did any registrar of this court can dare to say such thing to the Chief Justice? And that is the Prime Minister. And next submission. If it was so, if we believe he said so, so what was the natural consequence? I don't agree with you there. I encourage the registrar to oppose me on anything. सर मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया. नहीं मैंने आपका नहीं, मैंने जज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के रहे हैं, हम दूसरी तरफ बात की है. आप अपने तरफ ना लेके जाना. All of you. नहीं सर वो थोड़ा बात निकल जाती है, कोई बात नहीं. बट आप you have every right to disagree. मैन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जी. प्रूडेंट मैन है वो, खवातीन का भी इस्तेमाल कर लें वो कह रही है. खवातीन का? वो भी शामिल. खवातीन तो सबसे ज्यादा प्रूडेंट होती हैं. खवातीन से तो प्रूडेंट होता ही कोई नहीं है. नहीं वो कह रही है कि आप प्रूडेंट पर्सन कहें ना. अच्छा सॉरी आई एम रियली सॉरी. लॉ में लिखा हुआ है. वो तो क्या प्रूडेंट मैन ही लिखा है ना? हाँ वो ऑल जेंडर स्पेसिफिक वुड बी रेड एज. नहीं मगर आप अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस से जाएं पाकिस्तानी कल्चर में तो औरतों तो ज्यादा प्रूडेंट होता ही कोई नहीं. खामद को मैनेज करना, ससुराल को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, सोसाइटी से डील करना, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा होती औरत प्रूडेंट है. मलक साहब ये टीवी पे चल रहा है, वो घर वाले सुन रहे होंगे, छोड़े आगे चले. नहीं उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी. क्या अब सवाल ये है कि अगर ये बात वाकईतन he uttered these words to the Prime Minister, this so many words, so what would have been the reaction of Prime Minister? Immediately minimum was that he was to have been transferred. यही होगा ना कि भाई अब आप तो इस काबिल नहीं है, चले सैक नहीं करते, ट्रांसफर ही कर दें. He remained DG for 2.5 years. Kindly see. कब तक? ये 77 तक, जब 5 जुलाई 77 तक he was DG FSF. 2 years thereafter. Would it be probable? Would any prudent man would believe this? How it is possible? So this was his examination in chief. His story is not. What happened to him thereafter? वो तो पकड़ा गया ना जी, जब वो 5 जुलाई को मार्शल लॉ लग गया, फिर पकड़ा गया. और फिर क्या हुआ? Is he alive? पता नहीं जी, मैं तो पर्सनली नहीं जानता, चौधरी साहब को पता होगा. I don't know. मसूद महमूद जिंदा है, ये कह रहे हैं फौत हो गए. He's died. Thank you, sir. He went to America. Taken. There was nothing. Witness protection तो होता है when you don't know the identity. अच्छा. पाकिस्तान में तो ऐसी चीज नहीं है कोई. उस वक्त तो लॉ नहीं था विटनेस प्रोटेक्शन का. हाँ?
और सर ये अब बात मतलब अमेरिका चला गया जी, खुद चला गया या किसी ने भेज दिया, ये तो अब इस पे बहस पे पड़ेंगे, फिर मेरा टाइम बढ़ जाएगा। वो चला गया अमेरिका और मर गया, एंड ऑफ द मैटर। बिकॉज मैं जब सवाल पूछूंगा इट विल बी रेलेवेंट सर। मैं अभी व्हेन यू गिव मी परमिशन, नहीं आई डोंट यूज सर प्लीज दैट वर्ड्स, आई एम यूजिंग दैट वर्ड। नो सर, नहीं परमिशन नहीं है, मैं तो आप खत्म कर लें फिर मैं सर मैं खत्म के बाद बीच में वो उसका कैलिफोर्निया आ गया। अब मैं ये बात कर रहा था कि ये स्टोरी अब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ सामने रख के I have given 4-5 reasons. Now it is for your lordship to apply the test of prudent man, which includes women as well. डिक्शनरी सही होनी चाहिए अभी। डिक्शनरी को सही कर रहे हैं। चलें वो बाद में कर लेंगे जी, अभी इसको करते हैं। I think what the point you are making is not the test of prudent man, because if that we are doing, then we are substituting ourselves with the trial court. What probably we want to say that even an imprudent man would not do this. So that will shake our conscience. नहीं वो फिर सारा केस ही खराब हो जाएगा। imprudent man तो फिर नहीं वो तो imprudent man वो दूसरी बात मान लेगा, वो मैं नहीं मानेगा भी। नहीं बहरहाल वो अच्छा इसको फिर करेंगे। ठीक है आगे आप बात करें। Now I will touch some part of his cross examination. I have promised that I will conclude by 1:30. यार cross examination. It starts at page 82. पहला बताना। अब आप मैंने ये बता दिया कि ये रहा डायरेक्टर। Can you remind us what volume? वॉल्यूम इसका वही 2 है जी, 2 है कि 4 है? 2 वॉल्यूम 2 सर। 95 82 से शुरू होता है। इसका 64 से स्टेटमेंट शुरू है PW। जी सर जी। अब पेज 95 पे आ जाइए। 95। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये चीज इस सारे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि ही नॉट ओनली सेड नो टू द प्राइम मिनिस्टर बट इन वेरी हार्श वर्ड्स, वेरी हार्श वर्ड। ये उसने कहा। अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये आई एम एट पेज 95 सर, इन द मिडल जहाँ पे ये स्टैंप लगी हुई है ना टेस्टेड की, इसके आगे जरा देखिए। माई फर्स्ट विजिट टू द 4 countries was in the end of January 1975, but it is subject to verification, while the second was in November 76 till the beginning of December 76. अब कैसी बात है, ये फॉरेन टूर भी कर रहा है। ये पहली चीज नोट करें इसका। उसके बाद अगर पेज बोल 101 अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय लॉर्ड जस्टिस। यस ये जो आपका क्वेश्चन था सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है, प्लीज इसको देखिएगा। ये है पेज 101 पे, सेंटर पे सर स्टार्ट हो रहा है आई डिड नॉट। पढ़ूं सर? मिल गया सर जी। 101 के सेंटर में ये पहला स्टार्ट हो रहा है आई डिड नॉट गिव जी एनी प्लान टू, I did not give any plan of mine to Mia Muhammad Abbas for committing the murder of Ahmad Raza Kasuri, since Mr. Abbas has assured me about the execution of the order given to him by the then Prime Minister. Therefore, I did not give any persons to him for the execution of those orders. Question: did you tell Mia Abbas how and from where he had to arrange the arms and ammunition, if any at all, to be used for killing Kasuri? I did not. So this is a subsequent conflict. So kindly see this answer in the context of the statement of the witness that he was reminded by the Prime Minister, he was goaded by Mr. Saeed Ahmad Khan and Mr. Bajwa. अब उसके बाद वो कहता कि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, मैसेज दे दिया अल्लाह खैर सल्ला, वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नेक्स्ट पेज 109। Next, can you read the question on this page? The last question.
इसके बाद वाला same page 101 last question. When you made a confessional statement in this case on 14th of August 7, did you know that the attack at the life of Kasuri at Islamabad was a part of the conspiracy? I had the hunch. But it was so. Where is the statement of 24th August 1977? ये रिकॉर्ड पे ही है जी. हाँ? रिकॉर्ड पे है. अभी अब मार्क करके आपको दे देंगे. चार्ट में बता देंगे सारी उसकी. अगर कोई बता सकता है पेज. अभी बता दो, पेज बता दो. वॉल्यूम 4 पेज 687. वॉल्यूम 4 पेज 687. ये मैंने कहा था. पेज 687. मतलब साहब ये अप्रूवर की स्टेटमेंट जो ज्यादा मुश्किल लिखी है उसके अलावा है. हाँ रहता है ना जी. 2 स्टेटमेंट थी ना जी. एक इसकी स्टेटमेंट हुई कन्फेशनल स्टेटमेंट एट इस्लामाबाद एज एन एक्यूज. अब देखा ना जब फर्स्ट चालान आया इनकम्प्लीट चालान उसमें ही वाज एक्यूज. सो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ हिज फर्स्ट स्टेटमेंट. पहली क्लू इस्लामाबाद में हुई है. ये 687 पे मुझे नहीं मिला. ये स्टेटमेंट हुई है 24/8. ये तो जरा दोबारा बताएं. 687 ही है ना ये स्टेटमेंट. तो कोई कंटिन्यूएशन है. जी जी. क्या सर? 687 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ समथिंग. सर नहीं, ये वॉल्यूम 684 से शुरू हो रही है. ये तो अब्दुल खालिक का है. सर नहीं, वॉल्यूम कौन सा देख रहे हैं? 4 आप तक. ये डेट आप लिख लें 24/8/1977. ये स्टेटमेंट बताइए. इस्लामाबाद. ये पेज है 6. ये कौन सा वो दो ना बेटा. 6 आप कह रहे हैं 4. क्या है? 6 क्या है? नहीं ये तो कुछ और चीज है. किसमें? कौन से वॉल्यूम में? अब तक खोल देना. मैं बताता हूँ. पेज भी देख लें उसका. वॉल्यूम 8 है ना. स्टेटमेंट की तो वॉल्यूम तो दे. एक सेकंड सर ये देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं. ओके. ये बच्चे थोड़ा सा की वजह से घबरा जाते हैं. 24 अगस्त 1977 का स्टेटमेंट चाहिए महमूद मसूद का. सर आपको मिल गया. वॉल्यूम 8 है पेज 135 है. यही है वॉल्यूम 8. ये बेटर कॉपी उसकी मिल जाएगी. 135 सर. कहा था बेटा आवाज को छोड़ो ना. क्या करते हो? ये सर इसका सारा चार्ट बना के ना जी आपको दे दिया जाएगा सारा. बट ये बता. ठीक है जी. 164 की स्टेट. ये वही है जी. ये पहली स्टेट. सर अब प्रॉब्लम पता है क्या है? इतना स्कैटर्ड रिकॉर्ड है कि सारी देखने पड़ते हैं. ठीक है, अप्रिशिएटेड. और ये बेचारे ये सारा क्रेडिट इन ये 3 बंदे जो खड़े हैं इनको जाता है. 141 पे डेट है इसकी. 24/8 वही है ये. तो ये तो बेसिकली ये स्टेटमेंट. सर अब आगे चलो सर प्लीज. अब 109 पे सर. 109 है. हैदर अब जरा अलर्ट रहो. अब सर अब ये मेरा ख्याल वो वेल्च को तो मैंने टच नहीं किया था. बट बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसमें वो जनाब का नॉलेज बड़ा रेलेवेंट है. ये क्लेम करता है कि 74 में इसने वेल्च को फ़ोन किया और बताया कि जी टेलीफोन पे कि भी आप ये उसकी टेक केयर करें. अब उस वक्त 74 में कोयटा के लिए एसटीडी फैसिलिटी नहीं थी. वो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. आपको ऑपरेटर के जरिए बात करनी पड़ती थी. तो ये इस चीज़ को साबित कर रही है कि ये बात के भी आपने ये कहते हैं ना कोयटे में बात की
Mr. Welch has a general telephone at his office and another at his house. Question: in August 74, Quetta was not served by STD. Answer: I don't remember. अब ये तो the court can take a judicial notice of this कि उस जमाने में ये थी नहीं. Next week. मिस्टर वेल्च की क्या रेलेवेंस? वो जनाब उन्होंने कहा कि वो कोयटा में जब ये गया तो उसको कहा गया कि इसकी केयर करो, टेक केयर ऑफ हिम. और टेक केयर ऑफ से मतलब जैसे कहा इसको फारग करें, कोई अल्लाह रहम करे. तो वो फिर उसने कहा जी हमने तो वहाँ कुछ किया ही नहीं, कुछ ऐसी बात हुई नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था उस पार्ट को. अब ये पेज है 118. अब ये सर यहाँ से शुरू हो रहा है 118 से लेके 127 तक. ये सारी कन्फ्रंटेशन है. अगर जनाब हुक्म करेंगे मैं पढ़ दूंगा कि जो जो बातें इसने की अपने स्टेटमेंट में, इसको पूछा गया कि तुमने अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट में ये कहा था. इसने कहा नहीं कहा था क्योंकि मुझे पूछा ही नहीं गया था. सो दिस वाज. अब ये अगर चाहते हैं तो मैं इसको एक दो को पढ़ दूं. है ना? नहीं, जरूरत नहीं है. चलिए ठीक. 130. अब 130 पे आ जाए. ये 32 है बेटा, क्या हो गया है सर. 130 पे सर लास्ट क्वेश्चन, पेज 130, लास्ट क्वेश्चन. ये लिखे गए क्वेश्चन. सर प्रॉब्लम वहाँ ये हो रहा है, जो पढ़ के मैंने इंप्रेशन बनाया कि उनकी बात लिखी नहीं जाती थी. हालांकि क्वेश्चन नहीं लिखे जाते, सिर्फ उसको लिखा जाता है इस फॉर्म में, मगर वो फिर उन्होंने क्वेश्चन बाकायदा लिखे. अब ये क्वेश्चन है: Is it correct that on this tour you requested for leave ex-Pakistan for your medical checkup and treatment? Yes, but I invite the attention of your lordship to as observation made before this honorable court by Mr. Bhutto a few days ago that I had collapsed in ziyarat and that he sent me for treatment abroad. अब ये बंदे के ट्रीटमेंट के लिए उसको अब्रॉड भेजा जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है नो. Basically saying he's not part. 2 साल. ये So basically he's not part of the conspiracy. वो कॉन्स्पिरेसी बनती ही नहीं है ना. इसकी स्टेटमेंट, इसका कॉन्टेक्ट आप देख रहे हैं ना. ये तो मेरे जैसा आम आदमी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रूडेंट मैन, वो भी नहीं मानेगा. ये बात प्रोबेबल है ही नहीं, किसी एंगल से प्रोबेबल नहीं है कि ये बंदे को शामिल किया. और फिर अभी मैं लास्ट में वो जो गुलाम अब्बास का इन्होंने बयान उसको फारग किया कोर्ट ने कि नहीं जी हम नहीं मानते, उसको आप सामने रखेंगे तो फिर बिल्कुल ही बात नहीं बने. इससे आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे आगे आ रही है. जनाब मुझे आई एम कॉन्शियस एट 130, मैं क्लोज कर दूं. अब ये पेज 132 है. 132 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. It starts with the sentence, I do not remember the exact date. I do not. Last sir, शुरू से page 132. जी ठीक है नीचे. I do not remember the exact date when I reached London after staying in Belgium and West Germany for a couple of days or so. Such each I reached London. अब ये अगला जनाब ये एक नोट है. Learned Council submits that this question and those that follow pertains to the second visit. Answer: yes. I stayed in Hotel Intercontinental London as the embassy made arrangement for my stay there. अब मैं तो कभी ठहरा नहीं जी इंटरकॉन्टिनेंटल लंदन. फिर आपने ऐसे काम भी नहीं किए. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए. We've got the point. आप आगे और भी मजेदार है. नहीं इसे पढ़ा ही नहीं पूरा.
I stayed in the Hotel Intercontinental. Yes, I stayed in as the embassy made arrangement. During this second trip, my wife was accompanied me as an official attendant, as I was likely to be operated upon in case doctors so decide. It is incorrect that I has obtained a special sanction for $500 British pound and $1 for my wife her trip. In fact, a sanction was obtained for $500 only. I made no request for permission for the release of $1,500 or pound to me for my intended visit to America. It is incorrect that my wife and I stay for 3 weeks in London. वो जो spectacles की बात है, exact period. आगे एक बस ये लास्ट है. अब एक सेकंड लास्ट है सर. ये पेज 133 in the center. I did purchase in London spectacle fitted with a hearing aid, and the price for that 2 pairs was about £400. The total expense incurred on my wife and myself during second trip must have been ₹50,000. The question as to who was responsible for the payment of price of the spectacles was still under examination when I was taken into custody. अब ये इतने नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं इस बंदे के. अब इसको ये भी बात लगती है कि hearing aid he never heard anything before. अगर उसकी hearing aid का प्रॉब्लम है तो उसने नहीं पता नहीं अपने लिए खरीदे के बेगम के लिए खरीदे. ये भी तो हो सकता है कि उसको विन ओवर करने के लिए इतने नखरे बर्दाश्त करें. उसके विन ओवर किसने करना था? प्राइम मिनिस्टर ने. क्यों? ताकि उससे काम लिया जाए. तो काम तो हो गया. ये तो अब उसने तो इतना बड़ा कह दिया कि मैंने करना ही स्टेटमेंट. चले अब आगे लास्ट है पेज 134. ये सारे 134 सर. ये क्वेश्चन है सर. इज इट ए फैक्ट दैट ऑन अकाउंट ऑफ सच थ्रेट. ये अब ये कह रहा है कि मुझे थ्रेट मिल रहे थे, और ये मैं वाजे कर दूं कि वो जो थ्रेट की सारी कन्फ्रंटेशन जो मैंने आपको पेजेस लिखवाए उसमें है. अब उसका जवाब सुनिए. Is it a fact that on account of such threats you felt yourself insecure? Answer: I am not too sure about that. I am not too sure of that, as my faith in God is unflinching. अब ये अनफ्लिंचिंग फेथ का क्लेम करना बहुत बड़ी बात. बहुत फेथ तो सबका ही है, मगर वो बंदा ये बड़ी बड़ी ऊंची बात है ना जी कि मैं तो 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता. तो क्या ऐसा बंदा कंस्पिरेसी में आएगा जिस पे अल्लाह का फेथ? अब इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे अनफ्लिंचिंग को. हाँ, गैर मुतजलजल. यस, वेरी गुड, थैंक यू. गैर मुतजलजल कि वो जो इधर उधर नहीं होता, फिक्स. इस फेथ बड़ी कैटेगरी है. ये क्लेम तो बहुत बड़े बड़े लोगों का हो सकता है जो अल्लाह के खास बंदे. अब वो ये कह रहा है, अब इसको आप उस एविडेंस से मिलाएं. तो सर माय सबमिशन वुड बी that this statement is not even worth consideration. Not worth consideration for a variety of reasons. So sir, at the end I will just refer to an application. I will not read that. It was drafted by, I believe it was drafted by Mr. Bhutto himself. He himself drafted this application. इसका end दिखाना जरा. इसका end दिखाओ. एंड से साइन कहाँ है उसके? इधर क्या करते? बिकॉज इट इज नॉट. मैं जनाब कहाँ से शुरू हो रही हूँ? वॉल्यूम है 8 पेज 1 और ये एंड हो रही है पेज 60 पे. मैं चाहूंगा कि आप पेज 60 जरा देखिए. पेज 60 पेज 1 और खत्म हो रही है 160 पे. पेज 60 सर जी. ये आप देखेंगे कि ये किसी काउंसिल के लिए नहीं है. ये भुट्टो साहब ने खुद डिक्टेट करवाई है और उनके इस दस्तखत हैं यहाँ. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेहतरीन इंग्लिश और ऐसा बेहतरीन कंटेंट्स नहीं पढ़ा कभी. इतनी और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे पढ़ लें इसको. इसका बाकी बातें रेलेवेंट नहीं है, वो आप माने ना माने, इसको पढ़ें जरूर. इतनी खूबसूरत, इतनी सिंपल इंग्लिश
कि जो मेरे जैसे बंदे हैं जिनका इंग्लिश प्रॉब्लम है वो भी बड़ी आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। वेरी वेल ड्राफ्टेड। अब इस पे एंड पे उन्होंने एक लिखा, वो बताओ, ये पैरा 31 में उन्होंने लिखा क्या है? हाँ हाँ वो बताओ ना, ट्रायल ऑफ मर्डर क्या है। और एक एप्लीकेशन उन्होंने गवर्नर को लिखी, वो पेज 83 पे है। इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली? क्या इस एप्लीकेशन में कौन सा स्पेसिफिक क्लॉज तो उन्होंने ये किया, व्हाट इज दिस एप्लीकेशन अबाउट? सारी बैकग्राउंड दी कि ये क्यों, मैंने ये मेरे साथ ज्यादती हुई, ये हुई, और इसको जब खारिज किया गया थ्रू ए डिटेल्ड ऑर्डर, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन, ट्रांसफर तो इसकी एक वजह है ना जी। फिर उसके बाद मैंने इसलिए टाइम बचाया, फिर वो बाइकआउट हो गया, वो बाइकआउट कर दिया। मगर मैं सब कहता हूँ ये पढ़ने वाली है, वैसे भी पढ़ने वाली है, सारी स्टोरी बड़ी, आप इसको बुक की तरह पढ़ें। आप ये, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं फिल्म देख रहा हूँ। ये मेनली फेयर ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं। वही बिल्कुल वही, बहुत बड़ी बातें हैं इसमें, बड़ा लंबा टाइम चाहिए। अब मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ये पेज 82 में देखिए, इसी वॉल्यूम यही है, इसका पेज 82 देखे जरा। ये अनदर एप्लीकेशन व्हिच वाज सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ दैट टाइम। पैराग्राफ 13 की लास्ट लाइन 77 से शुरू हो रही है। जी सर, 82 पे जनाब आ जाए। ये क्या है, ये क्या है, इसकी बी लिखा है ना जी नीचे, 13 के बाद बी आता है, रोमन कौन सा? ए लिखा है, ए लास्ट बी से ऊपर आता है, that the trial was illegal, it start with, मिल गया सर? The trial was illegal, that it stood vitiated, that it was not a trial of murder, but the murder of trial, murder of trial। तो मैं भी यही कहूँगा कि एंड पे कि जनाब ये आपके सामने सारी चीज़ आ गई। अब ये बात कि जी ये पुराना केस है, इसको क्यों खोला जा रहा है, ये भी एक ओपिनियन है, मगर क्या जो पुरानी चीज़ें हैं उनको करेक्ट नहीं करना कि हिस्ट्री को ऐसे ही रहने देना है। मुझे याद है कि जलियांवाला में 1917 में इंसिडेंट हुआ, बड़े इंडियन मर गए, जनरल डायर वाला वाकया बड़ा मशहूर है 100 में। तो कोई 80 ईयर्स के बाद प्रिंस चार्ल्स आया इंडिया, ही वेंट देयर एट दैट प्लेस एंड ही अपोलोजाइज्ड टू द इंडियन पीपल। अपनी गलती को मान लिया उसने कि ये ज्यादती हुई। अब आपके पास ये आ गया, आपके पास 186 में आ गया, जैसे भी आ गया आपके पास आ गया, आपके पास मटेरियल आ गया। अब जनाब ने देखना है कि क्या इसको ऐसे ही रहने देना है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज, क्योंकि वो स्कोप बड़ा कम है, या अपनी जो पावर, मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर आप तो सारे माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। आप 187 की जो आपकी पावर्स हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस, तो क्या इस सारी जो चीज़ें हाईलाइट हो गई आपके सामने, उसके बाद क्या इस चीज़ को डिनाई कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज? दिस इज ए क्वेश्चन फॉर योर लॉर्डशिप, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल, इस सारे मामले की पॉलिटिकल रिपरकशंस भी थी, मैं वो बात नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि इंटीरियर सिंध के लोगों ने अभी तक इसको नहीं भूला, बस दैट्स ऑल। Now can I ask you a few? You are welcome, sir. Please, can you have section 337 of the Criminal Procedure Code before you? Sir, उस जमाने का या आज का? नहीं, ये तो चेंज नहीं है। नहीं, चेंज हो गया ना जी, अप्रूवर वाला। हाँ, वो चेंज हो गया, नंबर चेंज। और उसमें अब जो चेंज आ गई है ना, नहीं अब का नहीं, उसी वक्त का। नहीं सर, नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ नहीं, उस वक्त का। क्या सीआरपीसी की बात करें? सीआरपीसी, मैं भी सीआरपीसी अप्रूवर का जो है सर, वो उसमें ये चेंज हो गया कि अब जो कत्ल के केसेस हैं लीगल एज के बगैर नहीं बन सकता। वो वाला इज नॉट रेलेवेंट। तो आप पुराना उस वो पॉइंट ही नहीं है मेरा। अच्छा जनाब, आपने सामने रख लें, हुक्म करें सर, हुक्म करें। 337 आ गया जी, फरमाइए।
ये आप इसके ऊपर ही देखेंगे ना? नहीं, अब जरा मेरा सवाल तो सुनिए। सर हुक्म करें। Masood Mahmood makes a confessional statement on 24th of August 1977. When is he given pardon and where is the order of pardon? बताओ भाई, ये confessional statement थी as an accused. I know. वो फिर दोबारा वो बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, मैं जवाब दूँ। ये confessional statement है at Islamabad as an accused. Thereafter, and that is why he was shown accused in the interim challan. Then his statement was recorded. 14th of September 1977. Where is that? At page. It's volume 8. Volume 8 में कहाँ पे है ये डेट है? ये कौन सी डेट है? 14/9 को? हाँ 14/9 को. Page 183. This was not referred to. 183. ये सब आई नहीं ना बात आपने पूछी. 183 पे वो एंड हो रहा है इसका, जिसमें वो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है. सर 183. Can you please read the magistrate's order? जी सर. मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आप पढ़ लेते हैं? पढ़ लेंगे. दे यार मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर. मैंने तो फिर और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 182 से. 182 से. जी. ये सर अब मैं पढ़ूं सर या आप? नहीं, अगर आप पढ़ लें सबकी मैं तो या मैं पढ़ लेता हूँ आप? ना मैं तो इजाजत ली है. कहाँ से पढ़ूं? शुरू से? आई डोंट नो, जो भी रेलिवेंट है. रेलिवेंट तो अब सर वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. या अगर मेरे ख्याल में 182 भी पढ़ लें. मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि वो लास्ट आप देख पूरा पढ़ लें, 2 ही पेज तो हैं सिर्फ. मैं पढ़ लेता हूँ सर, पढ़ लो. मिस्टर मसूद महमूद एक्स डायरेक्टर जनरल FSF. एक सेकंड सर, कोई स्टेटमेंट निकालो. An under trial prisoner. निकालो. I'll read it. An under trial prisoner confined in the camp jail Lahore had submitted an application on 7/9/1977 through the Superintendent District Jail Court Lakhpat Lahore, where he was located at that time, stating that he is involved in this case to the extent that he carried out the order of the former Prime Minister of Pakistan, Mr. Z.A. Bhutto, to cause the death of Mr. Ahmad Raza Kasuri in communicating the aforesaid direction to his subordinate, Mia Muhammad Abbas, a director in the FSF, resulting in the murder of Nawab Muhammad Ahmad Khan, the father of Mr. Ahmad Raza Kasuri. He has further stated in his application that the commission of this heinous crime haunted his conscience ever since, and he is voluntarily prepared to become an approver in the case if granted pardon, to enable him to place full facts before the court. He is also prepared to abide by all the condition of pardon. वो जो अगर वायलेट करे तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाए. The Deputy Director FIA, who is investigating the case, was asked to furnish his comments in the matter. His report has been received and examined. He has reported that there is no eyewitness in the case, and in the interest of justice and in order to see that actual culprits do not get unpunished, Mr. Masood Mahmood may be granted pardon and made an approver. Considering the circumstances of the case, Mr. Mahmood Masood had been summoned from the jail for recording a statement. In this respect, he is present in custody in the supervision of Shahid Anwar, Assistant Superintendent, Camp Jail, Lahore. His statement may be recorded. The provision of Section 337 of Code of Criminal Procedure have fully been explained to him. Statement of Masood Mahmood, age is so and so, so and so. The application Exhibit PA is in my handwritten and is signed by me. It is sent to the District Magistrate Lahore through Superintendent District Jail Court Lakhpat Lahore. I am at page 183. I know the facts which led to, and I am prepared to make full and true disclosure of the fact leading to the commission of murder of Muhammad Ahmad Khan. If
am granted pardon. It has been explained to me and I have realized that this pardon is being granted to me on the condition of making full and true disclosure of all the circumstances within my knowledge relative to the offense and to every other person concerned with it, whether as principal or as an abettor in its commission, and feeling that I shall be liable to prosecution. I am making this statement voluntarily without any pressure from any quarter. Mr. Ikram Iqbal Nadeem, Additional District Magistrate Lahore. Considering आप आगे जो कहते हैं ये भी ऑर्डर पढ़ूं? ये जरूर पढ़ें. ये भी पढ़ूं? जी जी. Considering the circumstances of the above noted case, I am of the view that evidence of above mentioned Mr. Masood Mahmood accused is necessary to connect his co-accused with the case, as no ocular evidence is being made available, as Mr. Masood Mahmood has volunteered to make a statement in respect of the occurrence in question, making a full and true disclosure of whole of the circumstances within his knowledge relative to the offences and to every other person concerned, whether a principal or abettor in the commission of the above mentioned offence. I grant him pardon subject to the provisions of section 337 CRPC, which have been fully explained to him. I am satisfied that he fully understand the said provision and have accepted the said conditions in his above noted statement. I hereby direct that the statement of Masood Mahmood may be recorded Mr. Zulfikar Ali Toor, MIC Lahore, today, strictly in accordance with the law. The said person is being sent to him in custody. Where is this statement recorded by Zulfikar Ali Toor? Page 235. Page 235, volume 8. Volume 8, देख लें. 235. इससे पहले एक पेज देख रहे हैं. इससे पहले मैंने मलिक साहब इससे पहले एक पेज जरा आप क्या सर 181 पे आइए. उस पुराने वाले में नहीं, इसी वॉल्यूम 8. हाँ, जो पहले स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं ना, ये 14/9/77 का है. इस प्रोसीडिंग से पहले एक रिपोर्ट मांगते हैं वो FIA से. जी. और ये है 12/9/77 जी, डिप्टी डायरेक्टर स्टेट को. जी. ये तरफ पैरा 2 181 पे पढ़िए. जी फरमाइए. पैरा 2 द ऑफिसर इज ओल्ड वन. नहीं, 181 ही है ना जी. यही पैरा मिस्टर मसूद महमूद डायरेक्टर जनरल. ये मैं पढ़ देता हूँ सर. मिस्टर मसूद महमूद एक्स डायरेक्टर जनरल FSF, an accused person in the above case has confessed before the High Court that he got the murder committed under the explicit order. 12 को वो लिख रहा है कि हाई कोर्ट के तो फिर पार्डन की प्रोसीडिंग शुरू की है. अब पता नहीं जी उसने ये बेसिकली चलाना है तो नहीं सर नहीं, वो मैं इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये रिपोर्ट है जो डिप्टी डायरेक्टर है ना FIA, ये उसने उससे कमेंट मांगे, वो जो DC है, और उस कमेंट में उसने ये लिखा कि उसने ये कोई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है कमेंट्स लेना, मगर उसने एहतियातन ले लिए. उसने लिखा कि इसने हाई कोर्ट में माना है. ये उसका वर्शन है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक. अच्छा, बयान है कहाँ? ये जो अप्रूवर वाला जो बयान है वो उसने लिख दिया ना कि अब ये 235 MIC दूसरा जगह उसको रेफर कर दिया कि ये इसका ये आ गया जी, आ गया. 235 वो कहाँ पे है सर? 235 पे, वॉल्यूम 8 का 235. ये कैसी राइटिंग है? ये बड़ी माशाल्लाह सर, थोड़े गौर से पढ़ें तो बड़ी मजेदार है. ये बस ये 2 पेज का. हाँ, तो इतना ही है. इसीलिए तो फिर जब कन्फ्रंटेशन हुई है ना, जो मैंने पढ़ा नहीं है आप नहीं, इसमें ये जो है स्टेटमेंट ऑफ मसूद महमूद. जी सर. अच्छा, अब एक चीज और मुझे दिखा दीजिए सर. हुक्म करें. गुजारिश कर सकते हैं. हाँ, ये जो इनका दरखास्त थी मसूद महमूद की, डेटेड 7/9/1977. वो देखो कहाँ. He had submitted an application on 7/9/1977. तो ये जरा हमारा रिकॉर्ड फिर तरतीब में हो जाएगा.
ये सर अगर इजाजत दें तो ये बच्चे बाद में कर देंगे ये सारी एक्सरसाइज। मैं सिर्फ वो देख लूं वो इसमें अब वो ढूंढनी पड़ेगी शायद इसमें या किसी दूसरे वालियों में घबरा जाते हैं। उसका जिक्र जो है पेज 1 वो मगर पता नहीं 179 पे सर जो पहले हम 179 पे ऐसे क्या हो गया। I have the honor to forward you application in original. Where अच्छा this is the application. नहीं, where is the application in original? वो रिकॉर्ड पे नहीं है जी, वो नहीं है हमारे अभी हमें तो नहीं मिल रही, क्योंकि होती तो इधर ही होनी चाहिए थी, मगर वो नहीं है। मगर फिर भी वो मैं नोट कर लिया है, तो ये इंशाल्लाह ताला वो सारा जो भी आप इनको बताएंगे जो कागज चाहिए ये उसको नोट करके फ्लैग लगा देंगे। ये इनकी मैं ड्यूटी लगाता हूँ, ये कल भी यहीं रहेंगे। आप इनको अपने स्टाफ के जरिए बता दीजिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। मसूद महमूद का ये जो बयान लिखा गया है अप्रूवर के तौर पे उसका बयान लिखा गया ऑन ऑथ, इसमें भुट्टो का नाम है कि इसमें कहीं जिक्र मुझे नजर नहीं आ रहा। ये एक सफे का बयान है, इसमें क्या है जरा पढ़ दें अगर इसको जरा थोड़ा सा, क्योंकि असल बात यहाँ से शुरू हो रही है ना। ये सर ये बयान पढ़िए तो उसे कहाँ पे है इसका बयान? मुझे ये लगता है कि ये बयान कंप्लीट नहीं है। यस मैं कहूँ कि इसमें वो किसी का नाम ही नहीं है और वो कंस्पिरेसी का जिक्र नहीं कर रहा। नहीं सर वो बयान कंप्लीट है ही नहीं। असल में हुआ ये है ना जी, तो ये आप ये भी ड्यूटी लगा दें इनकी। ये कहाँ से लाएं जनाब? ये अगर रिकॉर्ड आप में होगा तो ढूंढ लेंगे, ये हो सकता है वही हमारे रिकॉर्ड में असल बिल्कुल साहब के पास होगा ना, वो अभी आएंगे ना, वो बताएंगे। अच्छा अब मंजूर मलिक साहब चले, एक तो ये बात हो गई, ये नोट कर लें। एक आपको दरखास्त देना है, आप प्लीज नोट कर लें। और क्या दरखास्त देनी हमने? नहीं, वो दरखास्त का जिक्र जो है मसूद महमूद की, वो नोट कर लो। 7 सितंबर 1977। इनको मैं कह रहा हूँ कि यही नहीं, अगर ये नोट कर लें उसके बाद ये पूरा का बयान नेचुरली इनको रिकॉर्ड अवेलेबल जितना भी मांगे दे सकते हैं। सर एक सेकंड, अब एक सवाल आ रहा है, एक सेकंड पहले सर, वो ये ना बहुत घबरा जाते हैं जब आपका ऑर्डर आता है ना, तो ये इधर जाने के बजाय इधर भाग रहे हैं। आराम से पहले अगर इजाजत मेरे ख्याल में आपकी घबराहट है, मेरी तो नहीं है। एक बड़ा दरखास्त लिखे जो उन्होंने दी है कि मुझे पार्डन दी जाए, ये देखें सरदार साहब कॉपी, और सेकेंडली जो उसका बयान लिखा गया एज ए पार्डन उस मजिस्ट्रेट ने लिखा, MIC ने, उसकी पूरी तफसील लिख के दो। वो सारा जी नोट हो गया सर। अब मेरा आपने सवाल ही अब मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूँ। पूछे Masood Mahmood, this is without any disrespect to anyone in the courtroom. Masood Mahmood hails from the same area as Kasur. Coincidental, has good friendship. Either the person instructing him to assassinate is completely unaware of this fact. Yes. Or whatever reasonable thing, maybe they don't know about the friendship, and he also claims I have very good friendship. You would say, at least let me not ask him, he may go and tell the other side. That's one possibility. I mean, or the person instructing him clueless. The first director general walks into the room and he says, go and kill this person in Kasur. I mean, naturally, if someone wants to do a crime in a particular area, you don't get those people of that area because you don't know the connection with the other side. Or they may leak it or let them know. So we have not considered that aspect at all. Did the High Court or the Supreme Court consider that aspect? No. The other thing could be, now this is, yes, he is on the record. Yes, he's from Kasur. He's a sheikh from Kasur. I mean, it's on the record. He is, by caste he is sheikh. And from Kasur. From Kasur. एक और बात मेरे आते-आते रुक गई। नहीं, अब आपने मुझे फिर भुला देंगे फिर मेरा। नहीं, आप भूलेंगे नहीं, आप पहले सवाल थोड़ा कर लें तो मैं तो हाजिर हूँ जवाब देने। नहीं, ये सवाल नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन 100% नहीं, इस पे जरा सी अभी खत्म नहीं हुई बात। जी। Now I'm proposing something else. I don't know if this was suggested at all. I just want to know because I've not read the entire testimony. Maybe, who do you have animosity with? Generally, the closest to you. Your own area. Yes. I mean, a person from Punjab will not have an animosity with a person from Quetta. It will probably be your own neighborhood. Yes. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। Could it be that he himself was a perpetrator? Who? Mr. Masood Mahmood.
and put it on someone else. The Prime Minister asked me to do it. He admits knowing the person, he admits knowing the family. Was this line of cross-examination conducted or not? No. This was never conducted. Actually, the line of cross-examination on Kasuri Sahab was कि no, on Masood Mahmood. नहीं ये बिल्कुल नहीं ये बात की नहीं. Because would a prudent man also not consider, by I'm asking a person who lives in the same area to go and kill someone, he may be a good friend. देखें ना जी, criminal trial में basic जो purpose होता है. Coming back to prudent test. मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मुझे याद है, अब मैं जवाब दूँ. जी. क्रिमिनल ट्रायल में सरदार साहब आपके साथ बैठे हैं. टास्क ये होता है कि इस गवाह को हमने साबित करना है कि ये सच नहीं बोल रहा. अगली बात पे हमने नहीं जाना कि पॉसिबिलिटी क्या है. हम कहते हैं जी ये रिलायबल नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे मिल गया, मेरा आदमी बरी हो गया. ये आपने जो बात की है, इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी. बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि वो किसी अपनी दुश्मनी से ये करवा सकता है. ये प्रोबेबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मगर ऐसा क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं सजेस्ट करूं, और इस तरह का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं है मसूद महमूद. एक आखिरी पॉइंट. Welcome, sir. It took 3 years to prick his conscience. Was he waiting for the overthrow of the government? Yes, and then his conscience will revive? Because he's a very God-fearing man. अब मैं जवाब देता हूँ इसका. ये बड़ी सिंपल सी कहानी है. कॉन्शियस इसको तो इसी बात पे अगर आप कुछ भी ना लिखें तो इस बात पे इसको डिसबिलीव करें कि ये प्रेशर में आ सकता है. पहले एक के प्रेशर में था, उससे बड़ा प्रेशर आया तो उसकी लाइन ले ली. ये बिल्कुल वैसी बात है. तो ये तो आपको मैंने एक नहीं 10 सर्कमस्टांसेस बताए. खास तौर पे जब उसने ये क्लेम कर दिया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को नो कह दिया, और नो भी बड़े सख्त अल्फाज में, तो उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो पॉसिबल हो नहीं सकती. वो प्रोबेबल नहीं, पॉसिबल नहीं, अगली स्टेज है. इम्पॉसिबल हो जाएगा. आप उसको कहेंगे ये नामुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने पेंट किया है इस तरह का, वो इतनी बड़ी बात सुन के आपको लंदन भेजेगा सैर करने और इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहराएगा, और आपको वो स्पेक्टिकल्स भी ले देगा, हेयरिंग एड फिटेड, और आपके साथ वो फलाना टूर भी करेगा, और ज़ियारत में आपके गिर गए हैं तो आपका मेडिकल लंदन से करवाएगा. ये चीज़ें किसी स्टैंडर्ड से, मैं तो क्योंकि टाइम का मसला है इस केस के अंदर, अगर मुझे ये 3, 4, 10 दफ़ा पढ़ना पड़ा ये केस, फिर जाके मुझे समझ आई है कि ये केस क्या है. इतना लंबा केस बनाया गया. ये भी एक टेक्निक होती है कि इतना केस लंबा कर दो, उसमें इतने कागज लगा दो कि कोई उसको पढ़े ही ना. अब आपको मैंने बताया कि सिर्फ ये विटनेस है अगेंस्ट जुल्फकार अली भुट्टो. देयर इज नो अदर विटनेस. बाकी सारी सपोर्टिंग एविडेंस है. अगर आप, और फिर इस पे डबल टेस्ट आपने अप्लाई करना है. एक टेस्ट है एक ऑर्डिनरी विटनेस के लिए, फिर इसके लिए फिर corroboration लेनी है. वो है ही कुछ नहीं. फिर गवर्नमेंट की तरफ से कौन है? गवर्नमेंट की तरफ से ये अटॉर्नी जनरल साहब. So, do we have anything on the record, or can you find out that Mr. Masood Mahmood, कुछ किसी ने कहा विटनेस, इत्तेज़ाज़ साहब ने जिक्र किया कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए गए. How did he leave the country? Under what circumstances? My lord. Is it he chose to just move to America, or was some deal offered, or was witness protection? I mean, would the government must have some record of it? If you can just find this out. I will, man. Ajay, now who comes next? Mr. Sir, first of all, this without your help, I don't think we could have done, and I suspect none of the council have done this much research and did it in such great detail. So we really appreciate your endeavor in this regard. And if I may join my colleagues in thanking you and your young और नॉट सो यंग एसोसिएट्स. नहीं, ये यंग ही है जी, मगर मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि मैंने कल भी कहा था कि 90% क्रेडिट इनका है. इनको अप्रिशिएट कीजिए. इस बच्चों ने बड़ी मेहनत की है. ये रात को 2-2 बजे तक मैंने इनको अपने साथ बैठाया है और ये काम करते रहे हैं. बड़ा काम किया इन्होंने. बहरहाल दिस वॉज a ड्यूटी, दिस a great honor for me. I am grateful for the patient hearing for 2 days.
and it was honor for me as well. I'm grateful. Thank you. Thank you very much. Shall we take a short break and return, and we can continue? आप मैं तो जाऊं। कौन-कौन है? नहीं, पहले हम जरा मालूम कर लेते हैं कौन-कौन आज कर रहे हैं, फिर then we can see how it goes. Next कौन आना चाहेगा? वो फारूक नाइक साहब आएंगे या कौन आएगा? रजा रबानी? हाँ? May I? आप you want to say something, इत्तेज़ार साहब? जी? मैं कर लूँगा। आइए। नहीं, आप सिर्फ हमें बता दें टाइम, हम जरा भी करना चाह रहे हो, हाउस कीपिंग कर लें। How long will you take? जी, आप उन इधर देना, आ जाए ना माइक पे। जी जी जी। How long? क्योंकि बहुत ग्राउंड तो कवर हो गया है, कुछ नए पॉइंट्स कहिएगा। मैं जी नए पॉइंट्स। How long? I will be dealing mostly. How long? सर हाउ लॉन्ग? 1.5 घंटा तो लग जाएगा। नहीं नहीं, देखें हम इतने लंबे नहीं खींच रहे हैं इस केस को। वी वांट टू ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन। 1.5 घंटा देखें। नहीं, मलिक साहब ने बड़ा कवर कर दिया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब तो माशाल्लाह शायद बहुत कम होता जाएगा। तो जरा अगर जल्दी जल्दी कर लें ना, तो देन वी कैन, एज यू नो माय लॉर्ड इज रिटायरिंग, देन फिर अगेन दिस केस विल, आई मीन इट वाज यू वांट टू। नहीं, इस वक्त आफ्टर मलिक साहब presentation here, we would like it to be concluded. जी, तो quite frankly. Or what maybe you can do is wait for the others and see, maybe you आपका 5 मिनट हो जाए 1.5 घंटा से। नहीं, 1.5 घंटे से 5 मिनट। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था कि आपने कहा था मैं 30 सेकंड में केस फैसला करूँगा। नहीं, you don't stand by that statement of yours. फारूक नाइक साहब यही बात कही थी, मैं कहता हूँ 30 सेकंड की बात कही थी ना। वो मैं कहता हूँ वो वीडियो चला दें, आपको हम आपको जरा ज्यादा दे दें। मेरी बात से पहले आप वो वीडियो चला दें जो फारूक साहब के पास है, नाइक साहब के पास। चलें, ये सही है। फारूक साहब आपका क्या है? आप हाउ लॉन्ग वीडियो? वीडियोस एंड नॉट मोर देन 30 मिनट्स। अच्छा, who else is there? Raza Rabbani Sahab is making separate submissions. Most of them has been covered. Because you know we don't want to lose what we have registered here. We don't want to lose that effective presentation either. I compliment my learned friend. He's actually been your learned brother, and but he's joined us as a friend. एक सवाल रहता है जो मैंने पूछा नहीं इनसे। हाँ, वो आपको पसंद नहीं आएगा। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। बिल्कुल आएगा। तो ये 10-12 साल ये केस आपने चलाया क्यों नहीं फिर? जब आप इस तरफ से, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ब्रदर रबानी साहब, हाउ लॉन्ग? You by all means, if you write something, we're good. Sir, I've written, and I'll be submitting that, and from that I'll be making a synopsis. I will essentially be on only 2 issues. Number 1 is the impact of martial law. Time about 45 minutes to an hour. कसूरी साहब, आप कितना लेंगे? Are you representing yourself or do you have a counsel? जी, मैं खुद करूंगा जी। मैं एक How long? टाइम पहले बता दें। इतने लोगों का मैंने अकेले ने जवाब देना है? नहीं, आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना। आपसे पूछ रहे हैं टाइम कितना, जवाब वो कोई ना दें आप किसी को, आपसे अपना टाइम बता दें। मिनिमम 2 hours। ठीक। जाहिद साहब, हाउ लॉन्ग विल यू टेक? About 15 minutes just to finish up. Okay, now we can do one of 2 things. Either we can take those persons who are just going to take very limited time first, so they can go. And rather than one person takes and they come back again. I think you're coming from Karachi. Anybody else, or these are? Lord, as far as duration is concerned, after what? No, you are coming last. Gee, but probably unless something I have to say something after Mr. Kasuri has submitted, but what Mr. Justice Manzoor Malik has submitted, we are going by those. I will also be placing my submissions. Many of them have been actually. So हम ऐसा करते हैं, we come back at 2:30. Is that all right? And shall we take Zahid Saab first, if you don't mind, with consent? Because he says 15 minutes, and we can at least cover as much ground. After Zahid Saab, I'll take up some videos and then. आप अच्छा वीडियो का इंतजाम कर दें फारूक नाइक साहब के साथ, बिकॉज इत्तेज़ार साहब ने भी कहा कि पहले वीडियो आप देख लें। आप कैन यू मैनेज whatever the video you want it shown, so we can see it?
ठीक है, और अगर बहुत सारे irrelevant है, come to the point वाला कर दिया, videos will not take more than 15 minutes. आप जरा coordinate कर लें, and आप अपने कोई junior इनको coordinate कर लें, and Barrister Iftikhar is here, he'll do the need. ठीक है, तो भी and I'll take 30 minutes thereafter. So we'll come back in half an hour. Is that good? जी ठीक है sir. Once again, Manzoor Malik sir, thank you very much. To make my small we will give you statement. Fullest time. Just 2 minutes to see. Sir, my first question is, have we crossed the bridge of admissibility since Mr. Malik, you see, he has addressed you at length about the nitty-gritty of the case. The prudent man impressions which he will gather from his presentation is that he was more of a defense counsel than a friend of the court. Regarding your thing about, we're not going to cut up this case into 2 bits. We're going to hear everything. And if they don't cross the whatever constitutional or legal restriction, then all what has been said would become irrelevant. But if they do, naturally it will become relevant. And whilst crossing that, we may, I'm just really thinking aloud, and I should not say it, but I'm not speaking for my colleagues, but it depends. It's not a question of what minor irregularity has been committed, but something so grave as to shake the confidence of the court or something like that. Yes, we will certainly hear you. And your opinion, you are entitled to your opinion about Mr. Manzoor Malik, but he was appointed, he didn't come forward himself, we chose him as an expert, as he's a criminal expert, which maybe none of us have the same level of ability which he has, so therefore his choice was in your presence. And you had agreed to any objection taken by anybody to the choice of amicus. We did not appoint such amicus. Only the persons who were not objected to, we appointed as amicus, and you were one of them who did not object. So he's done his job towards the court, and if you like it or not, that's it. So we will the way return he has after gone half into an hour. nitty-gritty, that gives an impression of a defense counsel than an opinion. But that's my opinion. Thank you. Thank you. I'm free, sir.
my lord. Yes, Hazrat. Ji. My lord, two queries were put to us. One was my lord, that was very fast. Ji. My lord, one was the application which was submitted by Mr. Masood Mahmood for recording his statement. That application is dated 7th of 9/77. No, we know the date. My lord, it is Exhibit PW 2/5, and that will be in the record of the High Court. Exhibit PW 2/5. नहीं आपके इन डॉक्यूमेंट में नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है. हमारे पास हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है. अच्छा, if you can just also wade through that. And the other? The other document, my lord, a complete statement of the approver dated 14th of September was sought. That is Exhibit PW 2/6. हाँ, वो है का? My lord, we have requested your staff, my lord. अच्छा, आप if you can just. अब हम उनको देख के जी इनको आइडेंटिफाई करके जाएंगे. ठीक. जाहिद इब्राहिम साहब, अगर आप हमें जो ये सबमिशंस हुई थी जनरल जिस तरह आउटलाइन आप हमें वो अगर राइटिंग में दे देना, और जो जिस तरह आपने साथ ये एग्जिबिट और पेज नंबरिंग कर दें तो हमारे आसान हो जाए. We'll do that, my lord. ठीक है ना. आपने तो फैक्चुअल दिया है ना, जो सबमिशंस हुई है ना, उसमें अगर आप हमें जस्ट जनरल चीजें लिखते और जिन के ऊपर आपने रिलाई किया. We will be doing that. जी. My lord, I represent grandchildren Fatima Bhutto and Zulfikar Ali Bhutto. I have filed my CMA 64. Fatima Bhutto and Zulfikar Ali Bhutto Junior. Yes. Ji. I filed my CMA 64. CMA 64. 4 of 20. As far back as 6th of January. 2024. ठीक. Shall we keep it before us? Yes. Yes. Got it. Ji. So I'm mindful of the fact that, I don't want to retrace what has already been traveled upon. I'll just make 3 very brief points. The way I've structured my concise statement, if your lordships will be kind enough to consider just glancing at paragraph 12, which is at page 4, it reproduces the question which was recorded in the order of 21st of April 2011. Page 4. Which paragraph? Paragraph 12. Paragraph 12. What is this document? In my concise statement. आपका paragraph. जी, मेरे paragraph 12 में मैंने वो सवाल reproduce किया है. Yes. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. If it does not, its effects and consequences. Now, is this a question of law or fact? This is a question of law. And in fact, even the amicus, Mr. Makhdoom Ali Khan Sahab, had said that his arguments were also focused on this question. Ji. And this question is directed by the President seeking an opinion from this court in relation to a decision which has become final and binding. There is no doubt about that. नहीं, ये question reference में तो नहीं है. Sir, reference में है. कहाँ है? If your lordship sees the order. ये तो court ने उस वक्त बनाए जब subsequently ये बने. Question देखिए reference में कहाँ पे है? पढ़िए. If your lordship sees the order of 20. नहीं, आपसे ये नहीं, आपसे पूछा जा रहा है reference में ये कहाँ जिक्र है? कहाँ है? ये वहाँ तो ओरिजिनल रेफरेंस में नहीं है सर. तो देखिए ना 186 पढ़िए. सर उसके बाद अगर आप सिर्फ इजाजत दें. नहीं, आप जरा सवाल सुन जी सर. आपकी बात ठीक है. जी. ऑर्डर आया, लेकिन आप लॉ पढ़े. लॉ में तो प्रेसिडेंट जो पूछेगा वो हम देंगे ना. क्या हम अपने क्वेश्चंस को रीड्राफ्ट कर सकते हैं? आप कर सकते हैं. नंबर 1 कर सकते और ये जो 21 सर 21/4 का जो ऑर्डर है
वो कहता है कि this question has been forwarded in continuation of the reference. Yes. They were forwarded by the president. By the president. Not by the court suo motu. Not by the court suo motu. So that is what I'm trying to point out, that this question is part of the reference, not the original reference, but... okay, we can spend a whole day debating that. Yes. What is the point you want to make? The point that I wish to make, now in relation to this, in my concise statement, the way I've structured it, I have referred, my lordships, to the role of the complainant, which was also alluded to by my... Ji, sir. In paragraph... If you keep saying it was alluded paragraph to... 25, page 8, se leke page 9, paragraph 30 tak. This is in relation to the role of the complainant. Yes. After filing of the FIR and before the trial commenced, what was his role and what was his stand in relation to the accused? Where do you want to read from? If I may read paragraph 27. Yes. Yet in less than 2 years of lodging the FIR in April 1976, Mr. Kasuri rejoined the PPP. He continued to remain a member of and attended the meetings of Tehreek-e-Fikr-e-Qaid-e-Awam, an organization meant for propagating the political philosophy of Mr. Bhutto until April 1977. Mr. Ahmed Raza Kasuri even applied for the PPP ticket to contest the general elections of 1977 but was denied. Mr. Kasuri's letter to Zulfikar Ali Bhutto dated 8/6/1976 is particularly revealing. Where is this letter? My lord, this has been referred to at page 540 of PLD 1979 Supreme Court, the Supreme Court judgment. It has been referred to it. I'm reproducing it from there. I take this opportunity to express my deep gratitude for nominating me as member of the Pakistan delegation that participated in this year's spring season of Interparliamentary Union held at Mexico City, Mexico, and goes on to claim, we found that your image as a scholar statesman is emerging and getting wide acceptance. In another letter of 30 January 1977, reference? Again, at page 541 of the same judgment. Earlier, I have requested over half a dozen times to your MS for an interview with you, but to this date, I have not received any reply from him. I wonder whether Major General Imtiaz Ali ever made it known to you. I am taking this liberty to write to you and to request you personally to grant me an interview at your earliest convenience. I have to discuss many matters which concern the party and government. He ends the letter with the hope, I trust this letter finds you and Begum Bhutto in best of health, happiness and prosperity. Yet, the same person, months later, when martial law is proclaimed, becomes PW1. My lord, next in my concise statement... What's the point you want to make? The point that I wish to make is, if your lordship looks at the trial and looks at the conduct of the parties, the believability factor, that is this a person who could have been believed as PW1 when his stand in relation to the main accused is reflected in his own correspondence, in his own conduct. How did the Supreme Court attend to these letters? My lord, Supreme Court, these letters were referred to in the minority opinion of... no, in the majority opinion. My lord, majority opinion mein to iska taskara nahi hai, but minority only mention in minority opinion. इतना बता दीजिए कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में ये लेटर आए हैं? जी हाँ, एग्जिबिट हैं। एग्जिबिटेड है? जी, एग्जिबिट नंबर्स दिए हुए हैं। एग्जिबिट 119/D is the first one and the other one is exhibit PW3/16D. Citation? Lahore judgment? Supreme Court. 1979 Supreme Court 53. जी सर। ये दोनों ने डिफेंस ने भी एग्जिबिट करवाए? जी।
दूसरा वाला और प्रोसिक्यूशन ने भी पहला वाला एक्सप्लेनेशन वो देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन वो जरूर देते हैं कि ये तो मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज आई वांटेड टू समहाउ प्रोटेक्ट माई सेल्फ, which again does not go into with the character of the person that he himself put him out to be as someone who would never compromise on principles. It just does not match up. Then what I have done is, the important peg of this reference is the interviews of Justice Naseem Hassan Shah Sahab. There's an interview in minority opinion. What do they say? That if we can complete the story, the minority opinion refers to these letters and says what? It goes, I think it says exactly this, that what do they say, the judges? सर इस वजह से तो उन्होंने माइनॉरिटी ओपिनियन टर्न नहीं करता, वो तो टर्न करता है ऑन द लीगल क्वेश्चन ऑफ corroboration पे. No, what did they say? That these letters show that he couldn't have been a target. What do the minority opinion say? They quoted these letters. What do they express then? It alludes to the fact that this cannot be the conduct and character of a person who was earlier waxing eloquent about a person who now he's accusing of murder. Is it pertaining to the conduct of the complainant or the conduct of the accused? Or conduct both? Of the conduct of the complainant. Okay, that's the point I wanted to ask you. Move ahead. In relation to Justice Naseem Hassan Shah Sahab's interview, I've reproduced again 3 quotations in paragraph 33. I will not read those, and also the quotations from his books. Memoirs and Reflections, that is in paragraph 34. Again, I will not read those because they've already been read. There is one quote which is very important. And it sort of matches with one of the many queries that were raised, that this case cannot be divorced from the context in relation to the environment it was conducted in. It was martial law. And Justice Naseem Hassan Shah Sahab is also very aware of this. And he writes, if I may take your lordships to paragraph 34, Roman E. Page 13 of the concise statement. He writes, this is on page 33 of his book, I observed from the bench that martial law is not unlike a military occupation of the courts. We are helpless. But once this occupation is over, it is our duty to mete out justice. I felt this one quote encapsulates the mindset of Justice Naseem Hassan Shah. When he himself recognizes... It is just his mindset, or is it, would you say, depicts reality? It of course depicts reality, but it is, since he was on the bench since... Let's talk about this case. You see, this is a general statement made by a judge. Where is the correlation between the statement and the case which is before us now? So this particular quote was made in relation to Haji Saifullah's case after General Ziaul Haq had passed away, died, and Prime Minister Junejo's government... So we are to presume that this is a general statement for all cases which were decided? This is what he says. This is what he says in relation to his own mindset as to when he sat on the bench, how did he view the courts. He says, I'm not putting in any words, these are his words. It is not unlike a military occupation of the courts. We are helpless. But once that occupation is over, it is our duty to mete out justice. All cases decided during martial law are where judges are helpless. Because one of the questions raised was that why did Justice Naseem Hassan Shah
in 2002 make these revelations. He says in his in the introduction, a paragraph of this book. Got it. आगे बढ़े. इसको अगर बिलीव कर दें तो फिर मार्शल लॉ के दौर में जितने फैसले हुए सबको ओपन करेंगे? नहीं. Presidential reference नहीं है. One presidential reference and two, because he himself says he has made specific admissions. तो खुल जाएगा ना यार, फ्लड गेट तो खुल जाएगा. अल्टीमेटली तो आप देखें ना, कोई भी आ सकता है. वो अब्दुल वली खान का केस था और बहुत सारे केस थे, सियासी केस सुप्रीम कोर्ट तक आते रहे उन दौरों में, तो वो सारे अगर खुलना शुरू हो गए, अभी लेटेस्ट भी एक केस अभी पिछले दिनों में भी हुआ है, अगर वो भी खुलना शुरू होगा फिर क्या क्या होगा? सर अगर आप देखें डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब जस्टिस ने सिर्फ इस केस के बुनियाद पे उन्होंने स्पेसिफिक basically you're saying these observations have been made not about all cases, and if any other judge makes an observation about some other case, then maybe that could be opened up. It doesn't mean that all cases are to be opened up. Indeed. No, but how do you say that this is made about this case? I say that if you see the earlier admissions that he makes, one, about that he was an ad hoc judge. He himself felt that he would not be included in the bench. Two, that Justice Mushtaq Hussain came and met him with the Attorney General, trying to convince him to sit on the bench, which he himself says that this was not proper, this was improper to do. His revelations in relation to the trial itself, I'm saying you look at those revelations and look at this statement. This statement simply explains how he has made those revelations. I'm just drawing the connection between them. My Lord, the second point that I wish to make is that in relation to presidential reference number 2 of 2022, in relation to the Recodic case, again, the Maulvi Abdul Haq Baloch case judgment had attained finality. The presidential reference came, and I will only refer, if I may, to a paragraph from the additional note. What was the question of law in Recodic? My Lord, the question of law in Recodic and that Recodic judgment is that whether in light of that judgment could the government enter into these agreements. And these agreements were being entered into this time without any public auction. This judgment is not reported, but it was included in the booklet filed by Mr. Makhdoom Ali Khan, volume 1A. उसका सिर्फ एक पैराग्राफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के additional note का मैं पढ़ना चाहूँगा, if your lordship allows me. This is at page 509 of this bundle, volume 1. It's not reported yet. It's not reported. जी. I think वो आपको निकाल के दिया हुआ है 1A, volume 1A. Volume कौन से? Volume 1A. जी. ठीक है, पढ़िए. जी. पढ़िए. Paragraph 12. The judicial intrusion of this court in the Maulvi Abdul Haq Baloch case, with all the humility at my command and with utmost respect to my learned brothers, when viewed in retrospect, appears to be a rushed decision where there was no live issue left for determination. The very issuance of a mining license, which was the subject matter of the petition before the court, had already been cancelled by the appropriate licensing authority. In fact, time has proved that the financial exposure for such a judicial intrusion far exceeded the benefits it aimed to achieve and the financial losses it purportedly claimed to save. All I'm saying is, adopt the same legal reasoning and in retrospect make a determination in relation to these judgments, the judgment of the Lahore High Court and the judgment of the Supreme Court, to come to the conclusion that
That trial in retrospect was nothing but an intentional and premeditated conviction of guilt of a former Prime Minister. Why do you use the word former? Of a Prime Minister of this country, elected Prime Minister of this country. If you use the word former. I use the word former because, I mean, he's no longer there. He was a Prime Minister. His term had ended. At that time he was Prime Minister. At that time he was Prime Minister, yes indeed. So that legal reasoning should be followed. Last, I will just conclude by just one. There's this apprehension that the opinion of this court in its advisory jurisdiction should not damage the finality principle. Yes. How to avoid that? Lord Atkin had said this as far back as 1933. He said, finality is a good thing, but justice is better. That's all, my lord. Thank you for being to the point. Grateful, sir. Short and sweet. Is anyone else who will be short? We'll take them first and we'll take the longer people later. If anyone can be precise. नाइक साहब आप आइए. वो आपने कर दिया है नाइक साहब को वो जो रिकॉर्डिंग दिखाना चाह रहे थे. You want us to hear this first? जफर साहब कर ठीक है ठीक है ठीक है चलने दें. We let it run? जी 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 सर. Okay. कोई आ जाता है कि जनाब माशाल्लाह गैर कानूनी है, उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, आइन को तोड़ दिया है, लिहाजा आप माशाल्लाह को गैर कानूनी करा दें और उन्होंने जो कार्रवाई की है उसकी उन्हें सजा दें. जज साहिबान बैठे हैं ऊपर माशाल्लाह वाले ऊपर बंदूक के लेके खड़े हैं, तो फिर जज साहिबान क्या करें? आप ये कर सकते हैं. ये मेरे ख्याल में तो हकीकत पे मबनी है. लोगों का तो ख्याल है ना रेजिडेंस को करवाने दिलानी चाहिए और मिलिट्री वालों को यानी रेत तो लाहौर कर देना चाहिए. उन्होंने गलत किया है, मगर वो मिलिट्री वाले उन चीज़ों को निकाल सकते हैं. और दूसरा ये है कि लोग बिल्कुल करते नहीं. जब तक पब्लिक ओपिनियन ना हो वो कोई भी कोर्ट या कोई भी अदालत अपने सर इसकी ट्रांसक्रिप्ट हम देख लेंगे. ट्रांसक्रिप्ट देख लेंगे, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेंगे. Why should we hear? ट्रांसक्रिप्ट वो पढ़ लेंगे. Who read the transcript? I don't have time to read it. They will read it. No, I want to see the body language. Body language will देखना. शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और सरकारें के लिए बेहतर है. क्योंकि मैंने निकाल दिया और मेरी जगह कोई ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहे. इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने हमें दी है? जी हाँ जी दी हुई है जी. CM 59 थोड़ा सी नसीब खाली है मगर यानी अपनी सीट केस में मौजूद थे. आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या पाकिस्तान की अदालत की तारीख में ऐसी कोई मिसाल है कि महज मशवरे की बुनियाद पर किसी को फांसी दी गई? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये मशवरा तो नहीं था. उसमें तो वो था कि उनका ऑर्डर था कि वो यानी अपने यानी सबॉर्डिनेट्स को इसको खत्म कर दिया जाए. तो लिहाजा मशवरे की और बात होती है, ऑर्डर की और बात. सर ये जो जब मैं अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं एक्यूज हूँ, मैं कहूँ कि मुझे आप पर एतबार नहीं है, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्कुह नहीं है, तो आपको बतौर जज क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करेगा ना कि क्या देते हैं वजूहात. वज़ीर आज़म हूँ, आपके सामने पेश हूँ, मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी, आपको बैठा दिया गया, मैं कहता हूँ मुझे आपसे इंसाफ की तवक्कुह नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए?
ये किस पेज पे जी इसकी ट्रांसक्रिप्ट? सर एक मिनट, पेज 7 सर जी। ये जियो न्यूज़ ने अलग से दी थी, ये दे दी जी जी 58 है जी। इसकी आप वो जो ये जो इनके ट्रांसक्रिप्ट है वो बता दें कौन सा? ओके सर, ये जियो हमने नहीं दी थी, ये जियो न्यूज़ ने से आपने मंगवाई थी, तो जियो न्यूज़ ने दी हुई है ये जो है ना वीडियो। जियो न्यूज़ से जियो न्यूज़ ने पेज है वो फाइल हमें दिखा दें। ये आपने फिर क्या फाइल की है? हमने जो दूसरी फाइल की थी वो पहले हमने सुना दी थी, तो चीफ साहब ने कहा था कि जियो की मंगा के जियो की सुनी जाए। उनकी ट्रांसक्रिप्ट कर देते हैं, वो करके आपको दे देते हैं सर। किस पेज पे? सजा में कमी के बारे में तैयारी चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक साहब, जैसा जब आप कन्विंस्ड थे, जब आप फैसला दे रहे थे, डिसेंडिंग नोट ही आपको लिखना चाहिए था कि सब तक सजा ना दी जाए। जी हाँ, वो तो सकता था, मगर जब वो जो उनका वकील है वो कहना मुझे सजा की कोई परवाह नहीं, मुझे तो टोटल चाहिए। मैं समझता हूँ भुट्टो यानी जो है वो आप डिसेंडिंग नोट दे सकते थे ना, दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमजोरी है और कुछ उसकी या बख्तियार की भी थी। उसने हमें एक किस्म का नाराज कर दिया। इसमें which is the point? आप हमें ट्रांसक्रिप्ट देख के बता दें जो जो रेलेवेंट है। No need to go through the whole thing. We will go through it on our own. But he is not saying that he convicted wrongly. Where did he say that? So he's saying that he's not saying where is that portion where he's saying? No, he's saying right now. ये जरा ट्रांसक्रिप्ट ले लें, आप हमें बता दें जो आप हमसे जो कराना है। Where is that point, if at all there is this point? एक तो जनरल बात हो रही है ना, जनरल माहौल है, fine, okay. Now does he at any stage say that this was a wrong conviction? Sir, जो judgment आई देखे ना, ट्रांसक्रिप्ट से बता दें इस तरह वो कह रहे हैं। सर ये जियो की वो है ना, जियो की वीडियो है, हम आपको देते हैं, इसमें से बता दें। Because you wanted it played and I just wanted to know that does he actually say that, because he's saying कि वो आपको रिक्यूज कर देना चाहिए था, वो पूछ रहे हैं ना कमेंट जो who's interviewing him, and he's giving a general opinion about the state of martial law. But does he act, and he's saying that Yahya Bakhtiar should have argued this point, but where is he saying, but that was only on punishment, not on conviction. Where is he, does he at all say that the conviction, I did it contrary to what I've agreed with or whatever? वो बात कहीं कहते हैं या नहीं कहते हैं? हाँ या ना बताएं ना हमें। ये है ट्रांसक्रिप्ट जो जियो न्यूज़ ने दी है, जिसमें आप हमें वो ऐसी कोई बात है या नहीं है? ऐसी बात नहीं है कोई, मगर उसने बेसिकली ये कहा कि इट वाज अ केस ऑफ अ लेसर पनिशमेंट। वो बात तो कह दी, दैट इज उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, हो सकता था उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, चलें वो तो ठीक है, फाइन। इट्स अ केस ऑफ लेसर पनिशमेंट एंड नॉट ऑफ डेथ। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन द बट ही डजंट से कि कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। सी इफ इट इज नॉट अ केस ऑफ डेथ, तो वो जो सारी 4-3 है वो मैं समझ गया। दिस इज द बेस, क्या कहते हैं, दिस इज द बेस कि 4-3 खत्म हो जाता है। नो 4-3 पता नहीं, वो फिर एक अलग बात होगी। I may decide a case, but later I may think it was wrong. I can say that it should be less. आप दिखाएं कि कहाँ पे उन्होंने कहा that it was extraneous pressures and influences which convinced me to pass that order. Sir, इसमें जो और tapes हैं उससे आपको clarity आ जाएगी. If your lordships allow me to hear the other tapes also. Please, आपके सामने आप transcript में हमें बता दें, पहले पढ़ लें, फिर हम देखेंगे ना. Sir, there are other videos also of other persons कि जो कि juxtaposition में आपको देखनी पड़ेगी. First and foremost, it's him.
जी जी। सो आप इनका दिखाएं कि इनके कौन से आप ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, आप वो देखें, उसमें हमें बताएं कौन सा है। जब उसमें आप कर लेंगे देन वी विल गो टू समथिंग। यू कांट जंप टू समथिंग व्हिच इज वो तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप पहले इनका बताएं, बी वेरी क्लियर। जी जी। That is there any statement made by this gentleman saying that there was extraneous influences other than judicial which convinced me to pass an order in this case? Sir, in few words he has said that के martial law था। पढ़ देना उसमें से आप जो आप समझते हैं वो पढ़ लें आप। ये क्लिप नंबर 4 है जो इफ्तिखार अहमद सर, इफ्तिखार अहमद का क्वेश्चन है सर, आपने एक दफ़ा ये भी कहा कि फौजी आमरों के दौर में अवाम ने अदालतों को बेबस देखा और उनके दिलों से अदलिया का एहतराम जाता रहा, जस्टिस नसीम हसन शाह। जी हाँ, ये अभी कुछ हद तक दुरुस्त है कि फौज जब आती है तो ये कहती है कि जिन बातों में हम फैसला करते हैं उसमें अदालत को दायरा इख्तियार से बात बाहर होगी और इस मामले में नहीं दखल दे सकते, तो लिहाजा उसका बहुत मनफी असर होता है। इफ्तिखार अहमद सर, ये फौजी हुकूमतों के अलावा सियासी हुकूमतें ऐसा नहीं करती। जस्टिस नसीम हसन शाह जी नहीं, सियासी हुकूमतें करें तो उनकी बात कोई नहीं मानता है। ये जो सच्ची बात है कि क्योंकि आखिर जुडिशरी जो है वो उनके ताबे तो नहीं है, ना इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर अव्वल तो इफ्तिखार अहमद तो जर्नलों के ताबे है, जस्टिस नसीम हसन शाह हाँ ताबे है, क्योंकि वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जर्नल जो होते हैं वो पीसीओ कर दें, कुछ कर दें, और क्योंकि जुडिशरी में सबसे अहम बात है कि उनकी मुलाजमतें हैं। इफ्तिखार अहमद सर, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हिस्टोरिकल केस है उसमें जर्नल असर अंदाज हुए थे, जस्टिस नसीम हसन शाह नहीं। मेरा नहीं ख्याल असर अंदाज, हमें तो किसी ने नहीं कहा इस तरह फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब से बात करते हो और थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है। मैं 26 यानी this is the statement that he does not admit that there was any instructions or any influence by those people to him for a particular decision। पर ये कहता है थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते सर, नोबडी इफ योर लॉर्डशिप वुड अप्रिशिएट। सेंटेंस फिर से पढ़ें। जी मैं फिर से पढ़ता हूँ। नहीं सर, नहीं, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि इस तरह फैसला करो, इस तरह फैसला ना करो। हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब से वो बात करते हो और वो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो, और वो वो हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है। तो सर यू हैव गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। सेकंड वर्ड वो चीफ जस्टिस है। नो जज वुड, nobody would admit कि कहते हैं he was influenced by sitting as a judge। I don't know whether somebody would be or not be. That's, we don't want to go into the realm of conjecture. We are just going to take what it is said. But this is what the reality is, my lord. No. We got the point. We'll see it if we require it ourselves. But we don't want to take up valuable court time, because I just wanted to know if he actually says this. He says a lot of things but doesn't categorically say that. The only thing he talks about is the lesser sentence. But that doesn't erase the conviction. That doesn't, your lordship is right over there. But that we can't do anything about in any case. But that creates a doubt. आगे चले आप फिर आप आगे नेक्स्ट पॉइंट बताएं। सर नेक्स्ट एक वीडियो और देख लें। नहीं बता देना, आप पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें। बात ये जी आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के बताएं कि जी देखें ये बोला है, फिर हम देखें ना कि मेरा जो व्यू है फ्रॉम रीडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, व्हिच ट्रांसक्रिप्ट इज नेक्स्ट जो वीडियो देखा है, वीडियो जो हमने देखा है, नहीं इन्हीं की वीडियो है नेक्स्ट। जी जरा नेक्स्ट भी देख लेना, देन वी विल। आप पढ़ देना पहले। सर मैं आपको पढ़नी, जो मेरा कंक्लूजन है वो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसके साथ आपको मिलाना पड़ेगा। पॉइंट तो बता देना सर। पॉइंट यही है कि ही वाज बीइंग मैनूवर्ड, Justice Naseem Hassan Shah was being maneuvered by Justice Mushtaq Hussain and Sharifuddin Pirzada साहब, Attorney General of Pakistan। कह चुके हैं वो, हमने कल वो सारी बातें सुन ली थी। इसी के ऊपर वीडियो है जो क्लैरिटी देता है। क्या कहते हैं मजीद? सर वो वीडियो देखिए, आप जरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें जो आप वीडियो हमें दिखाना चाहते हैं। ये आपका CM 59 हमारे सामने जी 59 के अंदर
असल पहले ट्रांसक्रिप्ट दिखा दें, उसमें अगर कोई बात हो तो जरूर देखेंगे। पहले ट्रांसक्रिप्ट आपने सर मैं बताऊं ना, वो जो कई वीडियोस हैं उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। आपने फाइल करा हुआ है जी नहीं सर, कई वीडियोस ऐसे हैं कि उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। अगर आप जरा वीडियोस देख लें तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। दैट विल सेव द टाइम, क्या कहते हैं। I think that if you're only worried about the time will be saved if you just tell us. इसे उसका ट्रांसक्रिप्ट इधर नहीं है ना हमारे। आधे घंटे का वीडियो देखें, आधा घंटा 10 मिनट है सर, 2-2 मिनट के वीडियोस हैं। इतने में तो आपने वीडियोस देख लिए होते। आपने देखे नहीं है? मैंने देखी, इसलिए तो आपसे कह रहा हूं। Just tell us the point. We got this point, now we want to know the next point. Sir, next point is वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। नहीं आप बताएं तो सही ना, कहते क्या है, क्या कहा कुछ तो बताएं ना। सर वो जो पेज कौन सा है आप बताइए ना। पेज आपका सीएम हमारे पास है, उसमें कौन सा पेज है? पेज 60। एक CMA 58 of 24 भी है, उसके अंदर 59 में आप बता रहे हैं ना ये तो। जी हाँ जी, CMA 59 है ना ये। पेज 66 देख लीजिए, पेज 66। जी जी, इस CMA में 59 ये उसकी किताब है, क्या कहते हैं ये फाइल करिए। कौन सा पेज है? पेज 66। जी सवाल आखिर लास्ट क्वेश्चन सर। जी पढ़े। लेकिन जस्टिस मुश्ताक के भुट्टो से इख्तलाफात थे, क्या इस सूरत में उन्हें समाअत करनी चाहिए थी? फिर जस्टिस अनवारुल हक पर भी भुट्टो ने एतराज़ किए थे। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक साहब ने बहुत ज़ाती बातें की, कुछ वाक़यात भी रूनुमा हुए। अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था, मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाइल के साथ भुट्टो साहब के एतराज़ात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुलजिम अपनी मर्जी से बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरख्वास्त करने के लिए जज मेरे केस की समाअत ना करे। सवाल, जनरल ज़िया के जजों से ताल्लुकात थे, सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट में तो हॉटलाइन भी थी। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मुझे हाई कोर्ट के मुतालिक इल्म नहीं, ज़ाती ताल्लुक तो होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मौलवी मुश्ताक भुट्टो से नाराज़ थे, क्योंकि 8वें नंबर के एक जज को चीफ जज बना दिया गया था, हालांकि मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को राह किया था। मौलवी मुश्ताक ने बड़ी दलेरी के साथ उसकी दरख्वास्त को समाअत करवाई, यहाँ तक कि भुट्टो ने कहा मुझे इत्तला मिली है कि मेरे जहाज़ को बम से उड़ा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूंगा। मौलवी मुश्ताक के ख्याल में उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, हालांकि वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन बड़ी ताकत से जनरल ज़िया और मौलवी मुश्ताक का ताल्लुक ये था कि दोनों भुट्टो से खौफज़ादा थे। अगर ये आ गया तो एक जाएगा और दूसरे से भुट्टो पूछेगा बेटा मेरे साथ तो तुमने ये किया था, अब तैयार हो जाओ। ये उनकी राय है। जी 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 सर, दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्रेसिंग, क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्रेसिंग। यू मे हैव एन ओपिनियन, आई मे हैव एन ओपिनियन। जी 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 सर, अबाउट मौलवी मुश्ताक। ये पेज 66 वाला सवाल अगर दोबारा से पढ़ लें आप। जी जरूर सर, जरूर। जस्टिस मुश्ताक के बारे में, जस्टिस मुश्ताक के भुट्टो से इख्तलाफात थे, क्या इस सूरत में उन्हें समाअत करनी चाहिए थी? फिर जस्टिस अनवारुल हक पर भी भुट्टो ने एतराज़ात किए थे। डॉक्टर नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक साहब ने बहुत ज़ाती बातें की कि कुछ वाक़यात से भी रोनुमा हुए, अगर वो मुकदमे की समाअत ना करते तो बेहतर था, मगर जस्टिस अनवारुल हक ने बड़े मुनासिब दलाल के साथ भुट्टो के तराज़ात का जवाब दिया। ये भी बड़ी नाजुक बात है कि मुलजिम अपनी मर्जी का बेंच तो नहीं बनवा सकता, उसे किसी पर शक हो तो उसे हटवा दे, तो फिर यह अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी मुनासिब वजूहात होनी चाहिए। ये दरख्वास्त करने के लिए ये जज मेरे केस की समाअत ना करें। This is in fact relating to मौलवी मुश्ताक and अनवारुल हक। अनवारुल हक सर, अनवारुल हक, जी जी जी। There is no, वो मटेरियल बताए ना, where he says I was pressure in deciding this matter। अपना कोई एडमिशन है, ये रेलेवेंट है ना हमारे लिए। बाकियों की तो स्टोरी नहीं है चाहिए। सर ये अगर आप, ये किताब है रफ़ी रज़ा साहब की, ऑन पेज 73। पेज 73 किताब में नहीं पढ़ी। पेज 75 पे
मेरी सेट की किताबें किसने दो? मेमोइर्स और वो रशीद शाह साहब की मेमोइर्स और दूसरी आई नहीं शायद। पेज 75 ये कहीं है किसी बुकलेट? जी सीएम के अंदर ये जो भी आप सीएम देख लीजिए सीएम पेज 75 सर। नहीं पेज 75 पे थर्ड पैरा से मैं पढ़ूंगा क्लियरली। There was Mr. Naik, sorry to interrupt you, but a presidential reference number 1 of 2011 was sent to us. Now, that is reported in 2011 as SAMAA 962. The questions of the presidential reference are there. Now, we can keep reading this book and that book and that book, but we have to focus on the presidential reference and the questions that have been formulated. So, first tell us where are you, what you want to say arises from which particular question that we have to render an opinion on under Article 1. And can I just add to that question? Can you first tell us which is the question of law? Yes, I'll do that. Question of law? Sir, now I'll address your lordship before we even hear the videos. I will address your lordship on 2 points. Not hear the video. First of all, you tell us. Yes. Read this presidential question. And then we will read See, it. there are 2 main points on which I will argue out before your lordship. This question of presidential Please, reference. articulate kar dein hame. 186 says the president will send a question of law. Not question of fact, please. Please tell us what is the question of law. इजाजत हो तो मैं सर मैं इजाजत हो तो मैं बोलूँ ना क्या कहते हैं. See, there are 2 points on which I will dilate. One is the maintainability, this is the question of law, and second is the legitimacy and the credibility of the trial. These are the 2 points on which I will address your lordship. Number 1 is the maintainability, as my Lord Justice Mansoor Shah has pointed out. Let us read Article 186 first of all. Let me think. It's been a while that we read that. 186 sir. It's on my mind. ये 21/4/2000 का है ना, ये खुला हुआ है सामने. ठीक है. फारूक साहब, on a lighter note, कभी कभी हम पिटिशन डिसमिस कर रहे होते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं, तो हम दूसरी साइड से पूछते हैं, do you want to help the council? बस ये बस on a lighter note. So let us read 186. If at any time the President consider it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. Now there are 2 things as far as this article is concerned. Now, President has to decide that वो तो उन्होंने कर दिया, भेज भी दिया सवाल. अब आ जाता है what is the question of law. Question of law has not been defined anywhere in the Constitution. The Constitution is totally silent as what is the construction of question of law. I think we can figure it out. I mean, this is such going on for years. But the phrase question of law, the phrase question of law has been used at 5 places in the Constitution. The phrase question of law. You think Article 185 it's a mystery? In Article 185 it is written, the words which have been used in Article 185 is substantial question of law. Then in Article 185, that's fine. But what is the question of law in this case? इसमें तो नहीं लिखी दे दी है ना. नहीं वो पढ़ मैं चाहता हूँ आप बताएं ना हमें कि question of law कौन सा है जिसको हमें आंसर करना है. ये लिखे हुए आप पहले सर ये question of law इसके अंदर जो है. It's not question of law. I want him to answer. जी आप पढ़ दें precisely which is the question of law that the president sent, because we can't change it. President must have decided that public importance का ये सवाल. This is president's prerogative. Right. That he decides that this is a question of public importance. We can't go changing that question because the president's discretion. He has thought about it. He says it's of public importance. The court cannot
cannot change and modify and change the question. So having said that, which is the question? The question, if you, why don't you pick up PLD 2011 CMR दे देना इनको, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? उसमें लिखे हुए सारे. See, first of all, I would submit the words any question of law has to be given the widest interpretation. No, we are with you. President has all the power, authority to send it. वो questions पढ़ ले, ये आपके लिए आसान होगा. This is 2021 SCMR. भाई ऐसे भी सवाल भेजते हैं कि secret ballot, does it mean secret ballot? 11. हमें ये भी कभी-कभी किसी ने कहा तो अंग्रेजी का सवाल है, लॉ का नहीं है. ये पढ़ लें आप. ये जो कहते हैं 2011 SCMR 962 के अंदर, let's read from page 963. उसके अंदर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ किए गए हैं, whether the president has or Pakistan has forwarded. Actually, come to the point. Number paragraph 1 पढ़े ना. Yeah, 1. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4, sub-articles 1 and 2A, Article 8, Article 9 and Article 10A, due process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if it does not, its effects and consequences. नहीं, अब आप ये बताइए कि ये question of law है? नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा. I will not answer the question. Let the president answer the question. Fair enough. Fair enough. Why we debate this? This is for us to consider. If we don't consider the question of law, it is for us, before we assume jurisdiction in the matter, we need to know what the question of law is. This is actually a question of fact. Please look at the judgment and tell us whether at all it is violative of articles fala. This is a question of fact. I'll go visit the judgment and then say, oh, this is wrong, this is wrong, this is right. The question of fact is a different thing altogether. So please tell us, because before we assume the question of law, my lord, question of law. नाइक साहब, जब हम आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 8 की, आर्टिकल 10A की बात करते हैं, लेट्स टेक ड्यू प्रोसेस. Question of law and fact are both in it. You can't separate one from the other. Definitely, sir. So it's a question of fact. I can say it's a question. I can make it into a question of law. I can leave it into a question of fact. That's for us. Or not. What is due process? ये due process तो कहीं defined तो नहीं है ना. What's a fair trial? Article 10. Fair trial, we don't know what a fair trial. मैं बताता हूँ question of law कैसे होना था. Question of law ये होना था, whether can a trial or can a murder trial be decided when a judge is biased? This is a question of law. So one would answer, no, you cannot. This is a question of law. You can tell a question of law when there is a question of law, because you just have to think about it and answer. You're not supposed to. This is equally a question of fact. Fair enough. Everybody has a right to speak. So I'm saying that you have a question of law. There's a difference between the two. Question of law must be answered by looking at it, by not investigating into the matter, by not carrying out an inquiry, by not going into the facts of the case. Question of law has to be answered as a question of law. Question of law could be, as I said earlier, could the trial be, can a trial be concluded or had to be correct if there was bias of the judges? Could there be any trial where the judges are under pressure? General question. आप तो कह रहे हैं फैक्चुअल बताएं हमें सारी चीज़. फैक्ट्स में तो मैं नहीं जा रहा सर. मेरी आप देखें. नहीं नायक साहब एक चीज जरा देख लीजिए. मिस्टर नायक एक चीज देखिएगा, ये पेज 963 के ऊपर जब ये शुरू हो रहा है ना ऑर्डर आपका, तो ये बेंच ने जो लिखा है यही झगड़ा है इस वक्त क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. तो ये आप पढ़ें, टुडे i.e. 21st April 2011, फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव बीन फॉरवर्डेड, नॉट फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ लॉ हैव बीन फॉरवर्डेड. ये खुद बेंच ने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, लॉ तो लिखा ही नहीं आगे. ये तो वैसी फैक्चुअल है. ये following question has been forwarded, not question of. Mr. Amir Rahman, maybe you make a note because maybe you have to respond. Amir Rahman sahab, if he can wake up for a while. अगर नायक साहब आप आर्टिकल 4 पढ़ लें. Amir Rahman sahab अगर उठ जाए तो नायक साहब sorry to get you out of slumber. Sir, इसमें अगर देखें that the question we will asking you also because the president को represent करें. May I draw your lordship attention? What's the question of PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट जरा हम देख लें. जरा दीजिएगा. इस केस के तनाजुर में नायक साहब अगर आप आर्टिकल 4 अगर आप सर अगर नहीं एक मिनट आर्टिकल 4 पढ़ लें, इसके ओपनिंग वर्ड्स देखें ए में. सर मैं आपको एक PLD जिसका जो आंसर है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, जरा उसको देख लें, पेज 563.
I would like to read that. What is a question of law? इसका meaning पता चलेगा if we will read PLD 2019 Supreme Court, page 563. DJ. The relevant is at page 569. ट्रिब्यूनल की क्वेश्चन ऑफ लॉ तो आप रिप्लेस कर लेते हैं रेफरेंसेस के ट्रिब्यूनल की पेज 569 पर आ जाइएगा सर जी पढ़ें Thus many questions of law, 1, that involves interpretation of the law, rules, instructions, notifications or governmental policies. 2, that has not been finally settled by the Supreme Court or is not free from difficulty or ambiguity or calls for discussion of alternative views. 4, that highlights a state of uncertainty in the law arising from a contradictory precedent or that points out blatant abuse of due process may pass for a substantial question of law of public importance. This is where this court has given the meaning to the word question of law. अभी तक जितने भी आर्टिकल 212 में तो और वर्ड ऐड हो जाता है substantial question of law. तो इधर तो मैं सर्च कर रहा हूँ इधर है any, इधर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है any question of law. रेफरेंस में question of law है मगर ये 212 का रेफरेंस आप दे रहे हैं पैराग्राफ 7 में जो जजमेंट आप कोट सर मतलब तो वही हो जाएगा any जो लफ्ज है it is more liberal than the word substantial. No, any would say that you can have multiple questions. Multiple but does not mean any के उससे आप question of fact बना दे. The question of देखें any का मतलब है multiple पूछे 6 पूछ ले president question of law. Yes, no problem on that. But that doesn't mean that any gives a license to go into question of fact. After hearing the videos जो अभी हमने सुने भी नहीं है. Videos तो बाद में आएंगे ना पहले आप सवाल तो बताएं. Sir, ambiguity has been created, uncertainty has been created in the judgment, and as a consequence thereof, it has become a question of law. Naik sab, ek second. I mean, one is all for fixing miscarriage of justice. There is no dispute about that. There could be different ways of doing it. We are examining whether at all this miscarriage of justice, if at all there is, could be fixed under 186. That's the precise question. It could be fixed through legislation. It could be fixed through some other curative review concept. If there is any in India, they did it. They did it. So they did a curative review. They said, okay, this has to be seen. That there might be options. There could be legislation. Parliament बना ले law के judgments को revisit किया जाए कोई अगर गड़बड़ हो जाए. हमें सिर्फ देखना है कि 186 की jurisdiction में हमें दरवाजा खोल सकते हैं कि नहीं. ये मत समझिए कि miscarriage of justice के against है. Of course we should fix our errors and we've no shame in fixing it. But तरीका तो बताए ना. आइन कह रहा है question of law बताए. हमने पहले देखना है question of law क्या है फिर फैसला कर देंगे. अभी तक नहीं पता चल रहा question of law क्या है. Problem ये है. नाइक साहब अगर आप देखें कि आर्टिकल 4 पे अब आ जाए जी आर्टिकल 4 में नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू द लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ. जी अब ये जजमेंट जो है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनली अटेंड कर चुकी है. दिस इज बाइंडिंग अपॉन ऑल कोर्ट्स and every person. अब अगर इस जजमेंट को आप फॉलो करेंगे जिसमें बगैर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन की एग्जीक्यूशन हुई है डेथ सेंटेंस, क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा? नंबर 1. नंबर 2 ये कि जो हाई कोर्ट ने ट्रायल चलाया क्या उसने इनकैपेसिटी ऑफ हाई कोर्ट चलाया या इनकैपेसिटी ऑफ सेशन कोर्ट चलाया? उसमें अपील का राइट भी गुजारा है. तो ये अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो कल को किसी का केस भी चला जाए कोर्ट में, किसी की भी एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी विदाउट कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट हम देते जाएंगे सेंटेंस. दिस इज नॉट लॉ पॉइंट for other people to come उनके लिए. The question आएगा कि whether the Article 4 को नजर में रखते हुए whether the Supreme Court and the High Court had rightly interpreted Section 120 of the Pakistan Penal Code regarding conspiracy. That's very important, sir. If there is no conspiracy, the whole case falls. भाई प्रेसिडेंट साहब ये भेज देना सवाल फिर देख लेंगे. सर अब आपके पास आ गया ना कि 120 देखिए ना Section 120 जो है that has become very relevant of the Pakistan Penal Code. Where was the agreement? वो खुद कहता है कि there was no agreement. See, if there was no agreement, there cannot be a conspiracy. I think, Mr. Naik, what Justice Jamal is saying, you didn't pick up, that can we leave such a, I mean, however the President has framed the question, who had sent it, who was the law minister or counsel? Your friend, Mr. Babar Awan. Dr. Babar Awan, sir.
Where is he? He's disappeared. But anyways. He's joined another party, sir, now. So the question, basically, my Lord has observed that we understood the substance of the matter, the language used by the President, how appropriate or inappropriate it is, may not reflect it, but we've understood it. Do we want this as a precedent? For instance, can the High Court bypass the confirmation process? Can investigation, once closed, it be reopened? Can transfer application be taken up without consent? Because whilst hearing this matter, a number of other questions have been arisen. So this is a judgment by 7 judges. At the moment, the answer to everything will be yes. Sir, you can rely upon an approval. You can approve. वो तो छोड़ दी ना judgment 4 or 3 judgment है ना. तो approval is okay. What is the standard of approval? That has not been discussed. So I think the substance of the matter has been placed before us. Now we can see the language, whether we can redraft it for. Maybe that was the intent, but maybe it was not gone into the kind of detail which Mr. Manzoor Malik has taken us into. Maybe the record was not available, but we've understood what the President wants. Do you want this as a precedent on the law books? That's all, to be followed by, because otherwise it's a judgment 189, it's binding on all courts. Yes, tomorrow the high courts will continue holding trials, murder trials, will not do confirmation of sentence if they convict. So these are, I think, we need to address him, whether we do it in this jurisdiction, whether we overrule it like we did the Sanaullah Baloch case. But I think exactly what the President is, I won't put too much weight on his particular language that has been used, but the intent of the language is there. And I think a lot of water has also flown on the bridge, because this court has taken cognizance of the matter. कि शुरू में कह देते कि आप प्लीज रीड्राफ्ट करके भेजो, अब हम टेल एंड पे जरा मुश्किल हो जाता है ना, अब जैसे इश्यूज भी रीड्राफ्ट हो सकते हैं कोर्ट्स में, so why can't we redraft a question of, if we don't change the substance of what the President wants? Do you have any objection with that? Sir, we don't mind. See, what we want is a vindication in the history. Number one, this should not be treated as this judgment should not be treated as a precedent at all. We understand that. If you look at the substance, if we've understood the whole thing, it is that this was a mistrial. यही है ना? बिल्कुल. So आप हमसे opinion ले रहे हैं कि ये mistrial है. This is a factual question. ये जो आप कह रहे हैं ना, binding precedent. Sir, ये factual. It's not a factual inquiry. How is this illegal? It is. After looking into the material, your lordships will come to the conclusion that it is a mistrial. It's a factual exercise. It's not an inquiry. Inquiry is, sir, with due respect, inquiry is something else. It is just looking into the material which is already on the record. Already on the record, on the basis of that. Factual और क्या होता है? आपने देखना है सारा evidence और देखना है कि सही decide हुआ था कि नहीं. Let me come to your rescue. Let me come to your rescue. I think we can look at this reference in another perspective. That we don't go into the merits of the case. We don't go into the sections, but we look at the events which were taken in the periphery, whether they meet whether justice has been met or not, whether Article 4 was met, whether due process was complied with when the trial was taking place. And these are events which have come to light because of certain statements made by a certain member of the bench. So we don't go into Section 336 or Section 120A. We don't go into that. We look at the situation which prevailed at that time and whether the process was in accord with law or not. Sir, आप देखें, as it has been argued upon, FIR was registered on the. Let's break some new ground. नहीं सर, मैं खाली थोड़ी सी इजाजत हो. In November 74 the FIR was registered. अगर आप चाहते हैं 6 साल चलाएंगे. नहीं सर आप थोड़ी सी. सर मैं FIR का मैं आपको सर आप इजाजत होते हैं 2 मिनट के लिए. September 75 के अंदर केस
फाइल हो जाता है इंटरेस्ट। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगता है। ये भी हमें पता है। अच्छा, जब मार्शल लॉ लगता है तो उसका जो लॉ कंटिन्यूएंस ऑर्डर है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ये भी हमें पता है। ठीक, अब कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है, ओथ ऑफ जजेस को भी चेंज कर दिया जाता है। जो सेगमेंट था विद रिगार्ड टू द तो दिस इज वेयर द लेजिटिमेसी, जो मैं आर्टिकल 4 की बात कर रहे थे। You are repeating what has been said. We want you to say something new. आप क्या कहते हैं ये सब कुछ खाली इस केस के लिए चेंज किया गया है? नहीं सर, ये पूरे मुल्क के लिए किया गया है। नहीं सर, बिकॉज बेसिकली द होल जनरल ज़ियाउल हक वाज ऑर्केस्ट्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रायल। मुश्ताक साहब को, जस्टिस मुश्ताक को एक्टिंग चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 216 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बातें तो सदर ने की नहीं है ना। हम आपको केस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप और स्ट्रीम पे जा रहे हैं। सर, ऑल दीज थिंग्स, द लेजिटिमेसी ऑफ द ट्रायल इफेक्ट हो रहा है। द पर्सन हु इज हेडिंग द ट्रायल हैज बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप अगर पैराग्राफ 17, 18 और 19 पढ़ ले रेफरेंस सर जी, तो प्रेसिडेंट ने किसी हद तक अटेम्प्ट किया है जी तो वो एक लीगल लॉ पॉइंट क्रिएट कैसे पढ़े जरा उसका रेफरेंस, मेन रेफरेंस का और 25 पैराग्राफ भी। My Lord, it seems that subsequently it was supplemented with the questions of 5 questions of law, this reference, and I have with me, I as President of the Islamic Republic of Pakistan consider it desirable to obtain the opinion of the Supreme Court of Pakistan on the following question of law relatable to the reference, the question being referred here in below be treated as part of the reference, my Lord. Subsequently, whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan, ये वाले जो reported है, my Lord, this was sent by the President, signed by Mr. Asif Ali. उसमें पहले वाले मर्ज कर लिए ना उन्होंने, फाइनल अब ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ, पिछले वाले भी हैं, पिछले वालों से बात अब ये फाइनली जैसे सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह मादा, ये पहले रेफरेंस में था। आप समझे आप कोई नई बात करेंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कोई भी हमें नई असिस्टेंस मिली अभी तक, क्योंकि इस्लामिक प्रोविजंस की हम बात तो बड़े करते हैं मगर कोई हमारी मावनत नहीं करेगा। भाई बार बार कह रहा हूँ भाई क्या वो जी अमेरिकन फैसला, ये फैसला भी कुछ हमारी भी बहुत रिच हिस्ट्री है, उसका कोई हवाला दे दें, कोई नहीं दे रहा है। भाई इस्लाम में अप्रूवल की एविडेंस होती है, कोई हवाला नहीं दे रहा है। कि उसने मुझे कहा कत्ल कर दो तो मैंने कर दिया, अब उसको बख्श दिया जाए, दूसरे को सजा हो जाए, ये है इस्लाम में गुंजाइश इस बात की या नहीं, इसका भी हमें कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है। तो जो नए सवाल जो हमने आपसे पहले दिन से पूछ रहे हैं उसमें तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। मतलब बात तो करता है हर कोई इस्लाम की, मगर जब हम एक्चुअली केस उठाते हैं इस्लाम का फिर कोई नहीं आता है हमारी मुआवनत करने के लिए। आप 2 पढ़ें जी, तो पहला आ गया ना 2, और सारे पढ़ लेते हैं जो उनने भेजे, जो क्वेश्चंस भेजे सप्लीमेंट जी। बात किसने करना? This is the last one. Is there anybody else? Whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all other courts being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. ये तो क्लियर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया ना। जी जी हाँ सही फैसला है, बस ठीक है, खत्म, नहीं गलत फैसला है जी। तो कम से कम मावनत हो जाएगी हाई कोर्ट की, दूसरे सेशन जजेस की, कि उनको पता होगा यार इस जजमेंट को हमने नहीं रिफर करना है, क्या करना है। अब इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई फैक्चुअल बातें जरूरत नहीं है, मगर टू फॉर्म अ ओपिनियन ऑफ लॉ यू समटाइम्स हैव टू गो इनटू द फैक्ट्स। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले दिन कोई शख्स आए और वो सेशन जज बगैर ट्रायल के आई कन्विक्ट यू ऑफ मर्डर, भाई फिर आपको देखना होगा नहीं ये कन्विक्शन यहाँ तक जिसकी गवाही नहीं दी, उसको 342 का बयान करने का स्टेटमेंट नहीं दिया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी टू लीड डिफेंस एविडेंस, तो फिर इट विल कम टू दोज लीगल क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स द इनिशियल क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट इट ओपन्स योर डोर टू क्वेश्चंस ऑफ लॉ एज वेल एज factual. What are the facts? There's no question of fact. We shouldn't say question of fact. We should just say facts. It's a question of law. So factual, khatam.
नहीं दी गई legal consequences. So totality will be seen, and what is the result? I think maybe this is how I think about it. Your Lordship is right. This is what I've been submitting. The material and record has to be seen. Inquiry has not to be, and no inquiry need to be conducted. मैं अपना substitute finding नहीं करना चाहता हूँ हाई कोर्ट की, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब ये इसीलिए पहले दिन भी मंजूर, it is something so troubling to the conscience. Maybe I would have done things differently. Would it change the result? That's the test. It is so unconscionable. I think we have a very high bar to jump over. Yes, and once it is so unconscionable, then you lead to Article 4, Article 10A, the other Article 8. All those things come into the picture. वो जो बाकी चीजें, what is a fair trial? I mean, ये आपने opportunity नहीं दी. सबसे बड़ी बात जैसे जस्टिस मलिक ने पॉइंट आउट किया कि ट्रांसफर हो गया केस एंड नो नोटिस वाज गिवन टू द अक्यूज्ड. सो सी दिस इज व्हाट आई एम सबमिटिंग. आप कह रहे हैं कि आप पे मुझे भरोसा नहीं है. जी जी. एंड वजूहात दे रहे हैं, वो एक दिन में हो जाता है. ये सारी बातें एक इंडिविजुअल भी ले सकते हैं. मे बी वन लैप्स ऑन इट्स ओन मे नॉट बी सफिशिएंट, बट व्हेन टेकन टुगेदर क्यूमुलेटिव इफेक्ट यही है कि देयर इज अ कंप्लीट क्या कहते हैं वायलेशन ऑफ लॉ इन द ट्रायल दैट टुक प्लेस. देयर वाज ये बातें तो हो गई हैं. हमें कोई नई बात बता. सर सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं खाली इसी पर क्या कहते हैं कन्फाइन करना चाहता हूं कि फैक्चुअल इंक्वायरी नहीं कर रहे. पाबंदी लगाऊंगा. जी जी. अच्छा, अगर आपने बाहर जाके ये कहा कि 10 साल से केस का फैसला नहीं हुआ, तो फिर ये साथ साथ ये भी कह दीजिए कसूरवार हम नहीं आप हैं. सर मैं तो ये प्रेस से वैसे ही भागता हूँ. ये बुरा ना माने. ये अगर आप ये देखें ना, ये आगे आप सेकंड जी तीसरा पढ़ें. तीसरा पढ़ते हैं. Whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. See, all the arguments which have taken place till date before your lordships, I don't want to repeat, goes to show the answer has to be in positive, not negative. And the material has to be looked into, and no inquiry needs to be done. Whether the decision in the case of the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto fulfills the requirement of Islamic laws as codified in the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet. If so, whether present case is covered by doctrine of repentance specifically mentioned in the following surahs of Holy Quran. See, it's a question of repentance is slow. Repentance बाद वाली बात है. पहले वाली बात है fulfillment. ठीक है जी. तो देखिए, अब या तो आप कहें कि those are not applicable. If Islamic provisions are not applicable, then why should we follow UK precedents? I think Islamic provisions are more applicable than any. Definitely. There is a rich tradition of Islamic jurisprudence. So repentance is probably referring to maybe Justice Naseem Hassan Shah's interview. I don't know, because it's not clear what is meant by it. अगला भी पढ़ लें. 50 पढ़ लेते हैं सर. Whether on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. ये material की बात आ गई ना फिर. Total fact. ये हम नहीं करेंगे. सर material को पहले दो में cover हो जाए. सर material को तो देखना पड़ेगा ना. दो चीजें नजर से देखेंगे ना. मैं ये नहीं कहता हूँ कि factual inquiry. मैं खाली request करूँगा material to be looked into for the purpose of arriving at a decision. We've already done so. 2 दिन हमने सुना है. This is what our submission is. ये बताएं आपके ख्याल में और आपके क्या views हैं इस पे कि अगर एक डिसीजन ऑलरेडी बायस पे सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, क्या हम अभी उस पे दोबारा से बैठ के अपना व्यू दें? सर कर सकते हैं आप, क्यों नहीं. देखिए ना, आपने 187 में कंप्लीट जस्टिस करनी है. वो चीजें जो कि नहीं उनने कंसिडर की हो, हम उस पे कर लें, चले ठीक है. और जो उन्होंने गलत भी की हैं, जो ग्लेयरिंगली गलत है सर, ग्लेयरिंगली गलत है. थोड़ा सुन. जी. दोनों साइड्स को देखना है. हमने एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की हो गई है और वो एक्सिक्यूट भी हो गई है, हमने उसे भी जहन में रखना है. और फ्रेश चीजें आई हैं जिसकी वजह नहीं, तो फिर आप हर केस को इसी तरह, हर केस में हमारा एक व्यू होगा, हमारे बाद दूसरे आएंगे, उनका दूसरा व्यू होगा. सो ये चीज मेरे ख्याल में थोड़ी सी देखनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज हो जो कि उस जजमेंट में
ना एड्रेस की गई हो और आप हमारे सामने ला रहे हैं, हम बिल्कुल आप बताएं कि जी ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं आई दोनों में, तो प्लीज आप देखें ये मटेरियल आ गया है, इस पे आपका क्या व्यू ओपिनियन है? मेरे ख्याल में दो चीजें इसमें सर देखें, नसीम हसन शाह खुद कहता है कि ज्यादती हुई है, उनको छोड़ दें। जी लेकिन ना ओवरऑल पिक्चर अब आपने देखनी है। जिस तरह ये ट्रायल हुआ, मैं नहीं समझता हूं कि हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी ट्रायल इस तरह हुआ हो। जी स्टे फोकस। ठीक मैं जस्टिस याया का जवाब सियासी बात में चले जा रहे हैं, अब आप फोकस हैं इस पे खत्म करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे ख्याल में इसमें एक बात ये है कि एक तो वो जो डेथ पेनल्टी को कंफर्मेशन नहीं हुई हाई कोर्ट से, जो कि 374 की खुल्लम खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की वजह से अपील का राइट, जो कि फंडामेंटल राइट है, प्रिंसिपल राइट, वो डिप्राइव। ये आज तक किसी ने बात नहीं की जो माय लॉर्ड कर रहे हैं। एक राइट तो गया, तो there must be some outweighing considerations before the court के, या वो आदमी खुद के कि जी आप मेरा ट्रायल करें, मुझे लोअर कोर्ट पे भरोसा नहीं है, वो तो समझ जाता है वो अपना राइट, एवरी पर्सन कैन फॉरगो हिज ओन राइट, बट द स्टेट कैन नॉट टेक अवे समवन एल्सेस राइट कि तुम्हारी जरूरत नहीं है एक राइट की, मैं फैसला करूंगा, मैं अपना राइट फॉरगो कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ आप मेरा फैसला कर लें, मुझे नहीं चाहिए अपील, ठीक है, मैं तो कर सकता हूँ। This is what the state मगर ये किसी ने इस पॉइंट पे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं किया है। Maybe you can give us some case law on that. Can you take away someone else's right? You can forgo your own right, but I cannot take away your right. That's I don't think किसी ने इस पॉइंट पे टच नहीं किया। बड़ा आसान था नाइक साहब कि ये सवाल भी बन सकता था कि could there be conviction without a confirmation, without a reference and a confirmation under 374? A simple question, and one could have answered no. As a consequence, वो सारा unsafe हो गई judgment. इस तरह क्यों नहीं सवाल इस तरह के? सर देखें, आपने भी जो लेटर ऑन क्वेश्चंस जो बनाए, क्वेश्चंस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस बनाए, क्रिमिनल क्वेश्चंस बनाए, मगर ये अपील की जस्टिस जमाल साहब ने जो बात की अपील की, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं सर बात बड़ी क्लियर है, देखें ना, राइट ऑफ अपील खत्म हो गया। सेशन हमारी बात मैं बोल नहीं रहा कि मंजूर मलिक साहब ने बड़ी क्लियरली बताया कि सेशन ट्रायल होना चाहिए था। जब सेशन ट्रायल होगा तो उसकी राइट ऑफ अपील होगी, कंफर्मेशन होगा, मगर इसमें राइट ऑफ अपील भी खत्म हो गया। एक राइट ऑफ अपील खत्म हो गया ना इसके अंदर। इस पे कोई आप हमें केस लॉ दें ना, कुछ तो करें ना इस पे। सर केस लॉ आपको दे देंगे। वो करें ना, ये पॉइंट पे कर लें, इस्लामिक प्रोविजंस पे दे दें कोई केस लॉ, इस्लामिक प्रोविजन, और इसके ऊपर मैं आपको केस लॉ देंगे। क्वेश्चन ये हो सकता था कि क्या मर्डर केस हाई कोर्ट सुन सकता है डायरेक्टली? सर नहीं बने ना क्वेश्चन, सुने तो सही ना, तो नहीं बने तो हमें बताएं ना, हम क्या करें, बना लें। अच्छा दूसरा, आपने बनाए 8 क्वेश्चन बनाए, ये भी बन जाता। नहीं ऐसे आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि कैन वी चेंज एंड ऑल्टर द क्वेश्चन ऑफ द प्रेसिडेंट। नंबर टू कैन वी से द क्वेश्चन कुड हैव बीन कि जी ये जो कंफर्मेशन वाली बात हो गई, ये सारी चीजें उन्होंने बताई, जो मलिक साहब ने सारा जिक्र किया, सारे क्वेश्चंस थे, ये इस पे जनरल हमारी फाइंडिंग आ जाए तो जजमेंट ऑटोमेटिकली क्वेश्चन 1 पढ़ा जाए, उसके अंदर कवर हो जाएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना माय लॉर्ड, क्वेश्चन 1 कवर हो सकता है जी। क्वेश्चन 1 में, लेट्स रीड क्वेश्चन 1 सर। वेदर द डिसीजन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shahid Zulfikar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4 के अंदर ये कवर हो जाएगा सर, जो आप बात कर रहे हैं। सब आर्टिकल्स 1 and 2A, आर्टिकल 8, 9, आर्टिकल 10A ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 14 प्रोसेस था, 10A था भी नहीं सर, खाली ड्यू प्रोसेस देखने, 10A तो नहीं था, ड्यू प्रोसेस तो था ना सर, ड्यू प्रोसेस था। दिस इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। अगर इसको हम वजाहत से कर देते ना तो थोड़ा बेहतर होता। आप यस बाय इम्प्लीकेशन यू कैन से हैं कवर्ड, मगर जो वैसे माय लॉर्ड जस्टिस शाह ने बात की है कि वो अगर हो जाता तो आसानी हो जाती। वो क्लियरली क्वेश्चंस नहीं बनाए गए इसमें। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखिए, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ठीक करना बिल्कुल, आई एम फॉर इट, नो मैटर व्हेन इट हैपेंस। Our problem, my thinking for myself is, can we do it in this particular case in the kind of question sent? And secondly, the question is by the discretion of the president, who must have examined the public importance and then framed a question. It's the president, मतलब is the highest office. Definitely. I say okay, आपने तो चलो सवाल A पूछा है, वो तो गलत है, मैं नए सवाल बनाता हूँ। एक्चुअली सवाल पूछना क्या चाहिए था तुम्हें, ये हम कर सकते हैं। सर मेरी खाली आपसे अर्ज ये होगी कि ये What is your answer to can a presidential reference the questions as sent, can they be redrafted
ये बताएं नहीं, आप अपना ओपिनियन ना दें, कुछ रेफरेंस केस लॉ इज अगेंस्ट यू ऑन दिस वन। सर मैं ये नहीं कह रहा आप रीड्राफ्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप ये आंसर दे सकते हैं। आप बताएं ना, कोई जजमेंट पढ़े ना सर, आप कहते हैं रीड्राफ्ट नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। रेफरेंस टू एनी टेक्स्ट बुक, लीगल प्रेसिडेंट, कुछ तो देना पढ़े ना कुछ आप। ये तो हम भी कह सकते हैं। The weight of judgment is against you. Judgments are the reference का question president का चेंज नहीं हो सकता। आप बता दें हमें सर, हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दें, हम सवाल सर देखें, 2 जज फॉरेन जुरिस्डिक्शन से रिट ऑफ कहते हैं कोरम नोबिस की बात की थी। एक कैनेडियन कनाडा के अंदर भी इसी तरह की पावर है और कन्विक्शन को सेट असाइड किया गया था। अगर पावर है तो बात खत्म हो गई ना। कन्विक्शन को सेट असाइड किया गया था बाय द कोर्ट। देखें दुनिया में केसेस हैं, बर्मिंघम 6 का केस है, मटन का केस है, उनकी अपनी अपनी तरीकाकार है ना। किसी जगह लेजिस्लेशन है, किसी जगह कॉमन लॉ ने जुरिस्डिक्शन ले ली है, तरीकाकार है। आपसे सिर्फ इतना सवाल, कनाडा के अंदर एग्जैक्टली लाइक दिस है। अगर आप इजाजत दें तो कनाडा का मैं आपको बताऊं। नहीं, हमने पढ़ लिया है, आपसे पूछना। तो आप ऐसा करें मेरे ख्याल में, अब आपको पता चल गया है। एक फर्स्टली पहली बात यह कि क्या सदर साहब के दिए गए सवालात में तरमीम हो सकती है, पहला बात आप हमें इस पे नोट दे दीजिए। ठीक। दूसरी बात हमने आपसे पूछा है राइट ऑफ, अगर एक अपील चली जाए किसी मुल्जिम की, उसका वो लिया जा सकता है या वो खुद राइट ऑफ फॉरगो कर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात जो ऑलरेडी सवाल में रिकॉर्डेड है कि इस्लामी तालीमात के मद्देनजर ये हम इसको कैसे इस फैसले को देखेंगे, बिलखसूस अप्रूवर का रोल कि भाई मैं आपको कहता हूँ आप फलां को जाके कत्ल कर दो, आप तो बच गए, मुझे सजा हो गई। ये मतलब ये आप हमें पॉइंट्स दे दीजिए। ठीक, दे देते। आई नो आप शायद नहीं है, मगर हम आपको वक्त दे देंगे कि आप हमें लिख के दे दें। अगर हम आप आगे थोड़ा बढ़े, किसी और से सवाल करें, तो फिर अगर आपके जहन में कोई और बात आती है, बस आपने जो क्वेश्चन हो सकता है आपके जहन में और बेहतर चीज और मैं उसी के अंदर जो नोट दूंगा उसके अंदर जो ऐड करना होगा ऐड करके आपको दे देंगे, राइटिंग में आ जाएगा। ये जो आपने जिन वीडियोस का रेफरेंस देना चाहते हैं, प्लीज आप उनका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको दे के जो क्वेश्चंस आप समझते हैं कि ये रेलेवेंट हैं उनको आप हाईलाइट कर दें कि जी दीज आर द इश्यूज, दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आई वांट टू रिलाई अपॉन। ओके सर, ठीक है। तो वो आपके इंस्टेड ऑफ वॉचिंग का हमारे सामने होंगे, हम वो ट्रांसक्रिप्ट में देख लेंगे कि कौन सी चीज हमें आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, दैट विल बी डन। ठीक है, थैंक यू सर। चलें, अब नेक्स्ट जाहिद साहब हो गए, ये हो गए, आप रह कौन गए? इत्तेजाज साहब रह गए। नहीं, रजा रजबानी साहब आप किसके लिए? ये भी माइकस। Are you Michaels or you? No sir, I'm representing Miss Sanam Bhutto and the two. Farooq Saab, who did you represent? Farooq was representing Bilawal Bhutto. तो आप you want to finish? You also, अगर आप ही you want to add something? Yes, my lord, I would be adding. Do you want to go first or shall इत्तेजाज साहब पहले करें? आपस में आप लोग फैसला कर लें, हम इसमें नहीं करना चाहते। इत्तेजाज साहब, ठीक, आइए इत्तेजाज साहब। My lords, we have identified the documents. मिल गए आपको? They have been flagged. Excellent, my lord. Very good. Thank you. But we need that write-up which we said. My lord, will be given. ठीक है, take your time, लेकिन कर दें। Thank you for all your assistance. Wonderful. We may we proceed back to Lahore, my lords. Well, ठीक है, no problem. Thank you. Islamabad is a good city. Spend the night. We have a case. Great one. एक सेकंड, don't go before, एक सेकंड ठहरिए। One was the application. नहीं, एक तो ये हो गया, दूसरा किधर है? इसकी मुझे फोटो कॉपी कर दें जितने जजेस हैं। हाँ, सबको कर दें। बल्कि थोड़ी 2-4 और भी करवा लें कि बाकी वकीलों को भी दे दें। एक तो ये हो गई। This is the application which was yes. But maybe for the council's benefit, 5-6 pages. उसमें एक लगा हुआ था ना? ये खत्म लगा हुआ, उसमें एक लगा हुआ। आप ऐसे करेंगे, दोनों चीजें अलग अलग तरतीब से, हाँ, कुछ जरा 10-15 सेट बना दीजिए, ठीक है? This is the complete statement. ठीक है। No, for the benefit of council and for us also. Thank you for your assistance once again. My lord, I just wanted to confirm one thing, that would you be
winding it up tomorrow, or would you be convening tomorrow? To nahi jayega. Tomorrow we are here. We have a lot of work. We are here. The night is young. Okay. Or the evening is young. Okay. No, unless, like I said, then take on the burden of this case never finishing on your shoulders. If you're prepared to make that statement, we'll give you all the time in the world. Itizar sab. Who do you represent? I'm a guy. Any new points? With your considerable vast experience, we would like to hear some new points. New point. Although I've submitted in writing my submissions also. Which one? CMA number? Yes sir, CMA नहीं लगी. Oh, wonderful. हाँ. इसमें मैं इस पे नंबर भी लगवा लीजिएगा. हाँ. ये अभी ये दे रहे हैं आप हमें? दे रहा हूँ. अच्छा. ये सबके इतने सेट्स हैं? आ गए सारे. Do you want us to go through this? I'll take you through this and fast. Thank you very much. But I will just if you can just take us through it. जी. मैं पहले तो अर्ज करना चाहूँगा this paralysis we have everybody. Not just a judicial paralysis, but paralysis that we don't have any paralysis here. That we cannot revise or go into a judgment that has been attained finality. The finality का जो issue हमारे पे हमें paralyze कर देता है. It doesn't let us work on that. ठीक. If you look at एक चीज मैं पहले अर्ज कर दूं ये about the record. आपने 5 सालों पे हमने बात कर दी है. आपको की तवक्को है. मैं एक चीज अर्ज कर दूं. And I want to say that loud and clear. I am not prepared to answer question number 4. Question number 4. We're not asking you. I am not prepared to answer. I want to go on record. Because, सर ये जो है इससे तो मैं डरता हूँ इस सवाल को जवाब देने से. इस्लामिक लॉ वाला. हाँ. छोड़ दीजिए. इसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया और किसी को नापसंद हुआ वो जवाब. इतने फिरके इतने यहाँ तो मैं तो मारा गया मुफ्त में. I पता नहीं है हर एक चीज में this has to be brought in. और इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल के शेर है, and I've had to use these verses in the National Assembly, in public gatherings many times, क्योंकि कोई बात कह दो तो कोई ना कोई उठ के कहता जी ये तुम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो. भाई एक ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरी. वो इस्लाम का उससे ये अब फॉर्मली पूछ रहे हैं. ये देखिएगा whether the decision in the case of murder trial against Shahid Zulfikar Ali Bhutto fulfills the requirements of Islamic laws as codified by the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet. If so, whether present case is covered by doctrine of repentance, especially mentioned in the following surahs of the Holy Quran, Surah Al-Nisa, Surah Al-Baqarah. Any point बताइए ना. अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो ये आपके सवाल पे इन पे बहस करते हुए मैं कुछ इस्लामिक आप तो स्किप करना चाहते हैं वो कर लें. हमारे हम कोई जबर तो नहीं. आप जो मर्जी ना करें आप छोड़ दीजिए. वो अल्लामा इकबाल ने कहा जी वायदों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा. दिस इज अल्लामा इकबाल. मैं सिर्फ इसमें ये करके छोड़. वायदों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा. अपनी हर बात को आवाज़ खुदा कहते हैं. बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती. बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती. दीन की आड़ में क्या करते हैं क्या कहते हैं. और तेरे बंदों का जो ये हाल है शाफ़ा मेरे जैसे को तो क्या जानिए क्या कहते हैं. So I am not going to. आप इतना तो कह सकते हैं कि ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल को रेफर कर दें क्वेश्चन. हाँ ये मैं कह रहा हूँ. ठीक. अच्छा सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 186 को जरा देख लें. जी 186 ये अगर आप मेरी ये किताब देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इतना कुछ जो कि मलिक साहब के
पेपर में पॉइंट्स होते वो मेरी सारी बहस खा गए. दिस इज ऑल प्रिपेयर्ड इन वॉल्यूम्स नंबर 9, 8 ये सब कुछ हमने भी जुनैरा और कैसर ने किया है. आई डोंट टेक क्रेडिट ऑफ दैट बट दिस वाज अ पेनस्टेकिंग सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा. सर ये जो है पेज आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 186 लेट अस ये आपने रिप्रोड्यूस किया हुआ है जी पे जी ये मैं इसी में से जाता हूँ पढ़ता ही जाता हूँ. आई वोंट वो एसेंशियल फीचर्स ऑफ आर्टिकल 1 जिस कंपनी में जिस ऑरा में और गैलेक्सी में ये आता है आर्टिकल 186 उस आर्टिकल उसके में ये आर्टिकल्स हैं 184, 185, 186 से 187. इनमें क्या फर्क है और आर्टिकल 186 क्यों डिस्टिंक्टिव है? आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा इसमें है कि मे पास एन ऑर्डर ऑफ द नेचर ऑफ आर्टिकल 199. दैट इज द नेचर. अब वो फंडामेंटल राइट्स की भी कंडीशन है और पब्लिक इंटरेस्ट की भी है बट बेसिकली ऑफ द नेचर इन 199. 185 में मे हियर एंड डिटरमिन द अपील्स फ्रॉम अदर डिसीजंस इन द हाई कोर्ट. ये 185 की बेसिक चीज है अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट. अब 186 को अभी मैं छोड़ रहा हूँ 186 से the Supreme Court may, if it considers expedient to do so in the interest of justice, transfer any case, appeal or other proceeding pending before any high court or any other high court. The compulsive use of the word any really widens this actually. Then 187, subject to clause 2 of article 175, the Supreme Court shall have the power to issue such direction, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice. And any such direction in number 2 order or decree shall be enforceable throughout Pakistan and shall, where it is to be executed in a province or a territory or in the area forming part of the province, but within the jurisdiction of the High Court of the province, be executed if it has been issued by the High Court. Then, sir, 188 is the Supreme Court shall have the power, subject to the provisions of any act and of any rules made by the Supreme Court, to review any judgment pronounced or any order made by it. This I pause. This itself is a power that your lordships have. It is to be exercised under the rules, no doubt, but it is a power that you have even in this case. And I will come to that a little later, but then 189, any decision of the Supreme Court shall, to the extent of it decides the question of law, or is based upon the or enunciates the principle of law, be binding on all other courts of Pakistan. अब इसमें इस फैमिली में 186 को आप एग्जामिन करें एंड आई फोकस ऑन 186. सर आपकी इजाजत है. जो कुछ आपने पढ़ा है वो तो ऑलमोस्ट आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं और पेनल्टी आ गई. अब उसको दोबारा उसको पढ़ने का तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि 188 में क्या लिखा है, 189 में क्या लिखा है, 187 में क्या लिखा है. यू हैव एग्जॉस्टेड द रिव्यू, वो खत्म हो गया. अब रह गया 186 पीछे रह गया. आइए सीधा 186 को देखें, ये बड़ा दिलचस्प है. 186, if at any time the President considers that it is
desirable to obtain the opinion of the Supreme Court or any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. The Supreme Court shall consider a question to be so referred and report its opinion on the question to the President. Now, in this, we have judgments which clearly say that it cannot be sent back unanswered. The questions have to be answered, even if your Lordship's answer, this is not a question of law. I think one point which you missed, if you look at clause 1 and clause 2, the clause 1, the restriction is on the President, what he considers to be a question of law. But it doesn't say the Supreme Court will consider only questions of law. It says the Supreme Court shall consider a question so referred. Now that is the opinion of the President. Even if it's a pure factual question, I think we have to consider it. I don't know. Maybe that could be one interpretation and give your opinion. Or we could say that this is not a question of law. You could, of course, say that. Answer हमें वो उनकी सवाबदीद है. अब उसका प्रेसिडेंट खुद मुख्ता है या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करना है, वो एक अलग क्वेश्चन है. अब दूसरी बात, एक बहुत ऑपरेटिव पॉइंट किसी ने नहीं बताया. इफ द प्रेसिडेंट, आप जरा देखें ना सामने, आपको पॉइंट समझ आएगा जब आप जरा देखें. इफ द प्रेसिडेंट, इट कुड हैव सेड इफ एट एनी टाइम. इन 3 लफ्जों का मतलब क्या है जी? इफ द प्रेसिडेंट क्यों नहीं लिखा है? पेज नंबर 3. इफ एट एनी टाइम क्यों लिखा है जी? दैट मीन्स के पुरानी बातें भी आ सकती हैं सामने. नहीं तो एम्फसाइज हुआ है ना. अदरवाइज यू कैन कन्वे द वेरी सेम मीनिंग बाय द वर्ड्स इफ द प्रेसिडेंट. व्हाई से इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट? So either these words are redundant or they give... No. Any is a word that expands the categorization. It is unlimited. अब part 2 में नहीं लिखा है Supreme Court shall consider a question of law so referred. Shall consider a question so referred. The referred can only be a question of law. Shall consider a question so referred. अब वो प्रेसिडेंट के जहन में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है. हमारे नजदीक ये क्वेश्चन ऑफ, सपोज इस केस की नहीं बात करें, हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता ही नहीं है, हम उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे. सर ये सवाल पड़ा. उसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है सर. मैं इसे अर्ज करूं, अगर हर हालत में हमें कुछ ना कुछ लिख के भेजना है. बट वो जो ये जब इस तरह का होता है, सो रिफर्ड फॉर इंस्टेंस, इट अप्लाइज टू a particular entity or concept that has preceded. Something that has preceded. But can we, that is desirable. Was it desirable? Can we go into that? I don't think we can go into desirability. That is for the president to decide if it is desirable or not. And I don't think it is justiciable. Exactly. I don't think it is justiciable. Yeah, I agree with you. जी. Unless वो Cameron जैसा. इंतज़ार साहब देखिए, इसी में the president on any question of law which he considers of public importance. So the president must sit down, think, apply his mind, and think that this particular question is of public importance. मतलब ऐसा तो नहीं ना उन्होंने भेज दिया कोई सवाल, उन्होंने पहले सोचा कि सवाल क्या है और public importance का है. तो इसलिए बात हो रही थी कि आप for instance, आपकी जो बात है ना justiciable है या नहीं, suppose it is not of public importance. Can we say we not answer it because it's not of public importance? I think we still have to answer it. That's, I don't know, my tentative view on the matter. As far as the public importance is concerned, that is the domain of the president. The court cannot enter the domain of the president's discretion when it considers whether it is of public importance or not. Yes, the case law which has developed is whether it is a question of law or not. But a point has been raised by the worthy Chief Justice in which he
talks about sub-article 2 saying the question so referred. It's not question of law so referred. So this has to be looked into. अगर पहले यही सवाल एक सेकंड में ऐड कर दूं उसको लिमिट कर दिया है। इंतजार साहब इसमें जरा मैं ऐड कर दूं जो जस्टिस आया ने कहा कि देखें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस है ना कि हम प्रेसिडेंट की चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उन्होंने एक ओपिनियन बनाया है कि मेरे ख्याल में ये सवाल है क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये उनके मुताबिक है ना कि हम उसमें नहीं जा सकते, तो हम फिर किसी चीज में नहीं जा सकते। हम सिर्फ इसमें जाएंगे कि ये सवाल है इसका जवाब क्या है, हम इसमें भी नहीं जाएंगे कि अच्छा आपने पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल तो ये सोचा है लेकिन हमारा ख्याल है कि सवाल यूं होना चाहिए था, ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं, और इसमें सर जब so referred है, so it will be referred. Are you saying the word so means that it becomes justiciable that the question is of public importance, number one? Is it justiciable that it's a question of law? Is it justiciable that the president desire was properly exercised? Then we make all these things justiciable. If you are saying so referred implies all these things in it. No, sir, I'm not saying that. I'm not saying that because when it's the Constitution or any legislation, or you and I in general conversation say that this was so referred, and it refers to an entity which has been identified as a question of law in the previous, because the so referred has to come after something that is being referred and has already come. Correct. Now, so it will be to the law point. It won't. The numbers. You saying it will be the law point? Clause 2 will not expand the category. हमारे यहाँ मैं एक चीज अर्ज कर दूं सर, ग्रामर में मुझे बड़े हम वो कहते हैं लिखते उसमें, and for instance for such एक जगह आपने कहा है कि 100 bags of wheat were going on a truck and the truck crashed with such wheat. अब वो सच का यहाँ सच की जगह इट कर दें, आप उसकी जगह ये बड़ा सिंपल है, पर हमारे एक वकूला में सच का बड़ा जिक्र आता है और एक वकालत में इस किस्म के एक दो अल्फाज हैं which grammatically don't appear necessary. But अब सर इसमें मैं ये अर्ज कर रहा था, इसमें अब 4 चीजें इस 166 में 186 ये हमने कवर कर ली 4 चीजें। सर मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा किसी, मैंने तो आपको किताब दी है जो देखेंगे आधी से ज्यादा वो मलिक साहब वाली वो पैराज नंबर्स और वो भी सारे निकाले हुए जो है वॉल्यूम्स हैं, एंड आई वाज फीलिंग सॉरी नॉट फॉर माय सेल्फ बट फॉर माय एतजाज साहब इसका एक जवाब दे दीजिए मिस्टर एतजाज। जी सर, ये सुनिएगा, ये सब आर्टिकल 2 के अंदर ये वही बात है जो 186 में भी हो रही है। The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the President. So after considering the question, can we answer that these are not the question of law? Yes. Hey, of course it is not question of law. Then your lordships have to advise the President that these are not within the purview of his jurisdiction or his authority to seek an opinion on anything other than on points of law. And I will, in challenging, contesting the decision, the judgment of in Mr. Bhutto's case, I will be avoiding going into any statement, any piece of evidence. I won't even go. Nor we can reframe the questions. No. Reframing the questions में you will have. Reframing the question में आपकी authority कुछ होगी। वो 186 में कहाँ है? सर मैं उसमें judgments हैं
इसमें ये जो वो गवर्नर जनरल अगर सब्सटेंस वही है वो आप उसकी अंग्रेजी में थोड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, देयर कैन बी, यू कैन रीड्राफ्ट। सर इसमें ह्यूजली डिफरेंट, ह्यूजली ये रेफरेंस जो हुई, were you consulted when this reference came? Which reference? This one. ये जो आपको क्वेश्चन आए, no I am not. So who was? Baba Rawan साहब. Where is he? Baba Rawan was the lawyer for the referring authority, and then he the brief was taken away from him and was given to me. That was a bit late in the day. In fact, I inquired, and the Attorney General, learned Attorney General, said he was going to appear for the referring authority. So I reverted back to my amici position. There is an order by your lordships appointing me amicus, and I has not been withdrawn. So I'm here to serve your lordship. Milord, ये बड़ी उसमें जो गवर्नर जनरल रेफरेंस थी, यही इसमें आया कि क्या चेंज कितना कर सकते हैं। उसमें चेंज किए उन्होंने क्वेश्चन, उसमें कौन सी प्रोविजन के नीचे आया था ये सर? ये 56 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 213,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेक्शन 213 213 है जी इशफाक। और ये reported as, of course, as your lordships know, you wear your law on the sleeves. ये under ये है सर PLD 1955 Federal Court 213. Oh, sorry, 435. 213 to section 435. इसमें इन्होंने ये किया था, जो क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 3 था, और आपको याद होगा कि तमीजुद्दीन साहब वाली नेशनल असेंबली on grounds that it had not formulated a constitution was dissolved by the Governor General. Tamizuddin Saab challenged that Sindh High Court restored the. इसमें क्या क्वेश्चन क्या था? ये सर इसमें ये क्वेश्चन था, ये पढ़ देना, ये whether the Constituent Assembly page sir 449 जी सर, whether ये पैरा subsequently नीचे है, subsequently as suggested in the course of the court's order. Yes sir, the questions originally referred to were, ये दरमियान में इस पेज पे है 449 के दरमियान में, the last line है paragraph की. The questions originally referred were, what are the powers and responsibilities of the Governor General in respect of the government? आपने चेंज किए थे क्वेश्चंस, वो कहाँ हैं? वो सर ये इसी में आ रहा था, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन ही देख लें, दूसरे को पहला तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है, पढ़ेगा. What are the powers and responsibilities of the Governor General in respect to the government of the country before the new Constituent Convention passes the necessary legislation? इसको इन्होंने change किया. Subsequently, as suggested in the course of the court's order dated 18th April 1955, the following further questions were also referred for opinion. जो आएंगे यहाँ नहीं बनाए. जी सर, वो दो और आ. Whether the Constituent Assembly was rightly dissolved by the Governor General. ये उन्होंने वो उन्हीं ने भेजे.
जी सर, उन्होंने भेजे। हाँ उन्होंने भेजे। हाँ तो हम नहीं सर नहीं, आपने किया मैं कोर्ट में सजेस्ट किया पर शायद अभी कुछ और सवाल बनाना इसमें आपने चेंज किया। ये जरा देखिए, दूसरा डिफरेंस ये भी है ना, ये कि एग्जीक्यूटिव एक्शन पे ओपिनियन लिया जा रहा है। एक तरफ हम ओपिनियन ले रहे हैं एक डिसीजन पे ऑफ द कोर्ट। प्लीज कीप दैट डिस्टिंक्शन। सर आई शो योर लॉर्डशिप उसमें भी सर। अच्छा, इसमें ये जो वो ये इन्होंने किया ये था कि ये जो लफ्ज राइटली है, वॉज इट राइटली डिजॉल्व, इसको इस केस में द कोर्ट took it and answered it as was it legally and lawfully dissolved rather than rightly. Okay. ये सब्स्टिट्यूट किया। ये मैं आपको एक मिनट में दिखाता हूँ। 213 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाला। अप्लाइड ना भी करते तो उसे अप्लाइड राइटली डिसॉल्व करते, लॉ के मुताबिक डिसॉल्व हुआ है। अच्छा नहीं, डिस्ट्रिक्ट को जो मॉडिफाई हुआ वो भी तो कोर्ट ने तो मॉडिफाई नहीं किया। नहीं, वो कह रहे हैं अभी आगे पढ़ रहे हैं कि ये वाला जो राइटली वाले की जगह लॉफुल कर दिया जी। वो दे लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, वो किधर किया है? अगर पेज 521 पे जाएं तो वो तो वही रखा है, whether the Constitution Assembly was rightly dissolved by the Governor General. They discussed it as legally. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। आपने प्लेसेटम आई पढ़े? जी सर, प्लेसेटम आई पेज 461। एतजाज साहब, अगर आप वो एतजाज साहब रिकॉर्डिंग वाले रेफरेंस पे अगर आप देखें, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोर्ट ने अपने लिए इश्यूज बनाए। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, सम इश्यूज वर फ्रेम्ड। उस इश्यूज को डिसाइड करते हुए हर क्वेश्चन के जवाब आता गया। जी वो इस तरह तो आप कह सकते हैं कि बजाय इसके कि नए क्वेश्चन बनाए, उसको रिजॉल्व, उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए पॉइंट समझ लें, इश्यूज समझ लें, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, इस तरह की। उस अगर आप वो तो अगर आप जिस फॉर्मेट में भी उसको कर रहे हैं, यू हैव योर लॉर्डशिप हैव द अथॉरिटी, जवाब क्वेश्चन का ही देना, उसी क्वेश्चन को होगा। जी बैरिस्टर साहब, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता था तो वो क्या हो सकता था? अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रिक्वायर्ड था कि इसमें होता तो वो क्या होता? क्या मुनासिब क्वेश्चन ऑफ लॉ, मुनासिब नहीं यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें तो मुनासिब क्वेश्चन थे बुनियादी तौर पे कि असेंबली that is in the first question that covers that. किस तरह? क्यों नहीं, वो कवर करते हैं पहले क्वेश्चन। सर अब इसमें आप एक मुलाहिजा करेंगे, आई जस्ट गेट दैट आउट, आई डोंट नो व्हाई एस्केप सर। अब ये रीफ्रेज क्वेश्चन के तहत इसको लिया गया। अब इसमें एक दिलचस्प चीज आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको रिक्वेस्ट की थी कि प्लेसेटम आई पढ़ लें। आई जो है पेज 461 आई, वो इसमें जुरिस्डिक्शन को किया हुआ है एक्सप्लेन। sorry, I 461 reference under we cannot on this reference undertake this inquiry or record any findings on the disputed questions of fact, because any such course would cover us into a fact-finding tribunal, which is not the function of this court when its advice is asked
on certain questions of law. The answer to the legal question always depends on facts found or assumed, and since we cannot try issues of fact, the reference has to be answered on the assumption of fact on which it has been made. The Privy Council also has, under Section 4 of the Act of 1833, similar advisory jurisdiction, but no precedent from that board or from the federal court has been shown to us where a reference was ever made to ascertain a legal position after a trial of facts by the advisory court. We consider that there is nothing improper or peculiar about the manner in which the reference has been made. The Governor General has merely asked us to report to him what the legal position is if those facts are true. Mr. Itizaz Ehsan, you have placed us, or probably yourself, on the horns of a dilemma. You say that the Zulfikar Ali Bhutto case is bad law, should not be cited. And to support your contention, you reply upon the Maulvi Tamizuddin Khan case. It's a bit ironic. It's a bit ironic. This is unless you say this is good law. I am not relying on Maulvi Tamizuddin case. This is the Governor General's reference. वही डिसोल्यूशन की बात हो रही है। डिसोल्यूशन की बात हो रही है, पर मैं गवर्नर पॉइंट तो वही है। नहीं सर, पॉइंट बिल्कुल नहीं है वो। क्यों? ये तो मुनीर साहब की जजमेंट है। हाँ, तो वही भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन का सवाल है, इसमें आपको दिखा देते हैं। नहीं, हम कॉर्नेलियस अगर जरा आप देख लीजिए ना, ये आप हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो मैं आई एम नॉट। नहीं, देखते हैं, आपकी बात शायद सही हो, हम गलत हों क्या? इस डिसोल्यूशन को तो यानी इसमें ये बात शायद रजा रब्बानी साहब, अगर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं भी, we have to take the facts as they have been sent by the president as admitted facts. So we can't question the facts narrated in the reference itself. मैं अगर आपसे ये राय पूछता हूँ या मशवरा लेता हूँ, which is related to a Toyota car, तो आप उसको तो फैक्ट समझेंगे कि इसके पास 1986 मॉडल टोयोटा कार है जो चल रही है और उसके साथ ये बेचना चाहता है। आप यू विल नॉट बी गिविंग मी एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू। मेरा सिंपल सवाल है, इस सारी चीज को एक सवाल में बना सकते हैं हम। क्या ये सवाल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा कि प्रेसिडेंट ये कहता है कि भुट्टो's ट्रायल, ये जो जजमेंट है, ये मिस ट्रायल, बस सिर्फ यही सवाल पूछ लेते, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होता, क्योंकि फैक्ट्स वुड ऑल बी एक्सेप्टेड। इसको डिटरमिन करने के लिए हमें वो सारा एविडेंस देखना पड़ता एज एन एपेलेट फोरम, और फिर हम फैसला करते हैं कि ये इन्होंने गलत डिसाइड किया है। तो ये तो एक्सरसाइज नहीं ना इसमें एनविजिज्ड। नहीं, इसमें इस वक्त इन्वेजिज नहीं है। इस वक्त मैं बात कर रहे हैं। I am trying to, and I will avoid all getting into appreciation of evidence. My learned friend was, and वो तो हमने कर लिया है बाहर। ठीक है, ठीक। अब आप नए पॉइंट्स बताएं। मैं आपसे I will not tread on that territory. Mr. Itizaz, if we can take a short break now, or you want to finish soon, we don't want to push you, but we want that today you finish. Short break now, पर अगर कल पे ही रख रहे हैं तो नहीं, कल नहीं हो सकता है। चलो, आज ही होना है। मैं हाजिर हूँ। मैं not. Unless you're taking a few minutes, we'll wait. If you're going to take more than few minutes. No, I'm going to take more than that. I'm going to take more. So we'll take a short 10. मतलब हम घर बता दें ना कि आप इधर ही हैं वहाँ पे। सर बता ही दे। सर बता ही दे। कुछ बातें हैं अभी करने वाली। आप घर बता रहे हैं या शाह साहब बता रहे हैं घर? अपने घरों। मेरी बेगम तो मायूस ही रहती है, इंतजार ही करती रहती है। We'll take 15 minutes. We'll come back and take your time, sir. 20 minutes है सारा टाइम। 5 20 minutes.